got bit delayed, some legal work. Uh, the topic is what will happen 6 months down the line. So somewhere this period will merge with the, the election time, the election season. So US markets are booming, they will boom. Dow Jones was 38,000 at the top. Now it's 33, 400, 500. I don't know today what it is. So there is a lot of gap. Same with DEX, FTSE, CAC, Japan, Lagazar, Hang Seng. We are at the top. हमसे बढ़िया कोई नहीं है. And our markets, they are reeling from lack of volumes because two, three reasons. People don't agree with the valuations and people have no money to play. That is the main reason. Everybody has lost money, and unfortunately, I had an investor with me who used to play with me. He lost money. He filed a claim in NSC that he had not done the transactions. But anyway, so these are early signs of distress. In banking also, you see sign of distress. It's not in the newspaper, but the grapevine has it that there is stress in the banking. Automobile, I don't know why it's going up. Our our automobile sector is the most expensive in the universe, including Mars, Jupiter, Neptune, everywhere. It is that expensive. 50, 60, 70, 80p, unheard of. All the stocks are quoting at unusually high PE. Now, there are two things that come to my mind. Whether people are aware of the times to come, or people like me who think that bad times are ahead. Now, I'm in a minority, but how will you make money if you buy shares of this valuation? Suppose you buy something at 60p. It means that you will take 60 years to recoup your investment. But India, it is a momentum market. So people buy for the momentum. That's a different ball game altogether. It's not that I don't buy shares. I also buy at times what I wouldn't even think of buying. But there's money to be made, no problem about it. Nifty, Bank Nifty volumes are dwindling. A day will come when the volume will be only 15 to 20 lakhs. ऑप्शन में 10 करोड़ 20 करोड़ होएगा. वो पैसा नहीं है किसी के पास. ये हालत है. Now, coming to the banking sector, it's not performing only. It reminds me of my tweet a month ago or 15 days, I don't know, about HDFC and HDFC Bank. I said the holding of HDFC in HDFC Bank
will get extinguished on merger. Now, I tweeted about it. I have a fair knowledge of mergers, how they work, how the accounting is done. So net the value will shrink. No two doubts about it. So anybody who has a interest in the bank should study this. After the merger, holding company gets merged into the subsidiary. The capital owned by the holding company in the subsidiary will be knocked out. Period. So will be the value of the total entity. Now somebody tweeted that if this is your knowledge, what will happen of your followers? Unfortunately, he was my follower, so I said, please, uh, please unfollow me. ऐसे ऐसा पागल लोग आता है, कुछ समझता नहीं है, लिखते रहता है. अरे भाई, मर्जर होएगा, वैल्यू गिरेगा. कोई समझने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है. आप देखेगा एवरीडे 1-2 करोड़ माल उतरता है. तो वो क्या होगा बाद में? यस बैंक तो नहीं होगा, लेकिन स्टेट बैंक बन जाएगा 100%. एंड एज आई सेड अर्लियर that banking is in doldrums. The RBI governor said very categorically that banks are window dressing their balance sheet. What else do you want? Now, in tech, Indian tech industry, only I would short it bindas, but only fear is if I short anything, say any stock, say Infosys, and tomorrow morning they say we are into this chat GPT or something of that sort, इधर मेरा कपड़ा निकल जाएगा. So I would short it with a call, a bot, but it's not a good trade. Technology, if you are short, please don't short. In technology, one mid cap technology, this Scient is a 5,000 rupee stock. Anybody who wants can buy. It's a very good company run by professionals, no owners. Owners are behind, so that you can look and make money. Now, Indian markets, why they are staying afloat? Why it's going up every day or not falling as everyone is expecting? Because all the floating stock is bought by various entities. So, net there is no floating stock. So, you will not see a fall in our Indian market. And secondly, our published inflation is 5%. According to my calculation, inflation is 14% or 15%. Now, in this scenario of this high inflation, you don't expect equities to go down.
they will not go down. Yes, something terrible happens, it might go down, but again it will bounce back. So unless and until the supply factor is not in play, we should not expect the markets to go down a lot. My thesis of 12,000 remains. A lot of stocks are below 10,000. So actually, it's a very academic discussion because unfortunately, I don't dabble in Nifty, Bank Nifty, or options. I don't know now. I have forgotten. And if I play one lot, also I get scared. And in stocks, if I play 500 lots, also doesn't bother me a bit. And my humble request to everybody is, if you want to be a successful person, first 15 years don't trade in FNO. Yesterday I was on space of Dr. Saxena. I said this, that 15 years you only do equity, don't do futures. Then when you have money you do futures. ये तो तुम 2 लाख लेके 5 लाख लेके आ जाता है, वो कोई मतलब नहीं है. तो ये फ्यूचर्स को अवॉइड करो दोस्त लोग, बहुत सुख पाओगे. अगर आपके पास 5 करोड़ रुपया है, बेशक आप फ्यूचर्स खेलो, वो कट ऑफ रखो 5 करोड़ का. 2-5 लाख तो खाली आप वो सोचेगा तो आपको पैसा लग जाएगा. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अब पैसा नहीं बन सकता है. मैं भी आया था, क्या लेके आया था, वो कुछ नहीं. दुबई से आया था, ये वो सब, वो लंबा स्टोरी. लेकिन मैं फाटका खेला, बहुत पैसा आया, लग गया. फिर खेला, फिर तो ये कार्यक्रम चलता रहा. फिर मैं सोचा कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं होता है. फिर मैंने सोचा, स्ट्रीमलाइन किया, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. द शॉर्ट पॉइंट इज, प्लीज डोंट इंडल्ज इन फ्यूचर्स. इट्स अ वेरी डाइसी गेम. आप सोचते हो कि आप एक लॉट से खेलते हो, लेकिन सामने वाले को आपका एक लॉट शॉर्ट है या लॉन्ग है वो पता चल जाता है. इतने सारे टूल्स है ये लोग के पास में, उनको सब पता चलता है. उनको पता चलता है कि ये कोई बकरा आया, 100 लॉट बेचा, 500 लॉट बेचा, तो तलाश में ही रहते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पैसा बनाना है, स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट प्लेस. Buying stocks is the best thing you could do. You will make tons and tons of money. Pandey, sorry about it. uh, ये स्टॉक में ही आपका पैसा बनेगा. उम्दा शेयर लेना, कचरा पट्टी मत लेना. आपको लगेगा सुजलोन लेगा तो पैसा बन जाएगा, आपका नसीब खुल जाएगा. खुल सकता है, आई एम नॉट सेइंग नो, but chances are very less. Whereas suppose you buy a blue chip, suppose you buy, say, cumin, say, or what not, मतलब 50 स्टॉक है, वेस्ट लाइफ है, मैं लिख के देता हूँ, और 5 साल 10 साल
ये कुछ भी हो जाएगा, 2 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम, 15 टाइम, 30 टाइम, बिकॉज इंडिया पर से में वो प्रॉब्लम नहीं है। वो कोई रूलिंग पार्टी आता है, उसका प्रॉब्लम है, कोई ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, चलते रहता है। बट जो रॉक सॉलिड कंपनी है, दे विल ग्रो, सस्टेन, ग्रो, सस्टेन। आप लीवर ले लो, बकवास में बकवास, लेकिन वो रहेगा 100 साल तक, 200 साल तक रहेगा, पता नहीं कितने साल तक। तो ऐसा रॉक सॉलिड कंपनी लो, फर्स्ट क्लास शेयर लो और सो जाओ। हाँ, अब आता है टाइम पास का बात। अभी आदमी आता है शेयर बाजार में, टाइम पास कैसे करो? करो ना कैश मार्केट में ट्रेडिंग। आपको 500 शेयर क्यों खेलना है? 50 शेयर से खेलो, अपनी इच्छा पूरी कर लो। वो भी गलत है। वो जो स्पेक्युलेटिव नेचर है ना, आप जब तक कब नहीं करोगे, आपका उद्धार नहीं होगा। मैं सब लोग को बोलता हूँ, प्लीज आप अच्छे शेयर लो, और फिर वो डेट सीलिंग है कि वो डॉलर इंडेक्स है ना, यू वो यूएसए में ऐसा है ना, अरे छोड़ो ना। यूएसए कितना दूर है अपने से? कितना दूर है? 18,000 मील है या किलोमीटर है, उतना तो दूर है। तुम काय को सोचते हो उधर का? आपको लेने का 1,000 शेयर, आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपया, उसमें तो पूरा दुनिया का माँ बहन, इसने ये किया ना, यूक्रेन ये वो, अरे छोड़ना यार। वी मेक थिंग्स so complicated, it's beyond comprehension. ये भी चलिए, मैं बोला ये साइलेंट ले लो। आपका जितना ताकत है, समझो 1 करोड़ रुपया है तो ले लो 1 करोड़ का, वो जितना भी आता है वो छोड़ दो ना। फिर आप देखेगा F6 मार के कितना बाइंग सेलिंग। अरे यार, ये तेरा काम नहीं है, वो सब गलत है बाइंग सेलिंग का। इट इज पैडेड, दैट विंडो इज पैडेड बाय द एक्सपर्ट्स। वो असल में बायर सेलर ज्यादा होते। ओके, दैट्स अनदर। तो बाय गुड शेयर, गो टू स्लीप। खेलना है, टाइम पास करना है, करो। लेकिन गलती से भी तुम सोचा डेट सीलिंग में क्या होएगा, इधर ये होएगा, कुछ नहीं होता। और एक बात मेरे से सुन लो, ये दुनिया है ना, अब खत्म नहीं होता है। कोई ना कोई आदमी आके बचा जाता है लास्ट मोमेंट में। तो नेवर एवर थिंक कि ये भूचाल आएगा, ये वो ग्रीस का प्रॉब्लम हुआ था समवेयर इन 2011 और 12। आई मेंटेन वन थिंग, कोई ना कोई आके बचाएगा। सब इधर ये हुआ, वो क्या हुआ अल्टीमेटली, नाउ नोबडी रिमेम्बर्स। तो इंसिडेंट्स विल हैपन, स्टिक टू योर फिलोसफी। या lot of people talk about position sizing, then psychology and all. मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना फिलोसॉफी समझो। आपको क्या मांगता है, आपको क्या करना है, वो इम्पोर्टेंट है। ये तो सब ट्रेडिंग का बात है, वो छोड़ो उसको। वेयर डू यू वांट टू बी, से 5 years फ्रॉम ईयर, वो पहला डिसाइड करो। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सोचो। आप उसमें से कितना चैरिटी करोगे, वो सोचो।
आप कितना दूसरे के लिए कर सकते हो वो सोचो। ऐसे ही फालतू में ट्रेडिंग मत करो। एक फिलोसॉफी है, ट्रेडिंग इज अ फिलोसॉफी। जैसा मेरा फिलोसॉफी है, मेरा फिलोसॉफी है, बाय द बेस्ट एंड सेल द वीकेस्ट, इन बिटवीन नथिंग। तो ये मेरा फिलोसॉफी रहा है पिछले 20 सालों से या 25 सालों से। एंड वेर एवर देर इज मूवमेंट, फर्स्ट यू play with the moment, and after a while play against the moment. Huge sums of money can be made, but the catch is you should know to swing both ways. It's just not that you know how to buy, you should know how to sell also. So another interesting things, another interesting thing, that why don't we spend time on MySpace or any space talking about stocks? Why do people always talk about Nifty and Bank Nifty? Why? What is there in that? It is a tool to misguide you. If we take a poll of all of us over here and ask on Monday what will happen, few would be right and almost everybody will be wrong. We don't know anything about anything. मत करो ना। और ये ओ 50 स्टॉक का में क्यों जाना है, फॉर वॉट यार, एक दो स्टॉक निकालो। मेरे हिसाब से डीएलएफ इज नाउ सच अ स्टॉक, इट कैन क्रॉस द प्रीवियस हाई आल्सो। आई एम मतलब आई एम सॉरी टू बी सो loud, but somehow I get the feeling it's done his worst. Now is the time for his best. This I was trading huge in DLF when it touched 1,000 or something after the issue. Made a lot of money. Then मैं बोला छोड़ो यार कोई. Then I once or twice dabbled in it, but lost money. But now I think above 500 I'll be a buyer. Good quantity, easy money. It's going to be painless. And similarly, I don't know much because I don't scan those stocks. But good stocks you will have to buy, and I would suggest please buy MNCs. They are the best companies because the owners are foreigners, and in foreign also, it's not a family-owned business. My only problem in Indian companies is most of them are family-run, and which are professionally run. Yes, they are good. But क्यों जाना इंडियन कंपनी? Standard 17% CAGR for times to come in MNCs. वो बोलता था मैं क्या स्नाइडर बहुत, तो मैं बोला ये बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, अब बेच दिया तो और 40 रुपया बढ़ गया. Okay, anyway, it doesn't matter. But the point is, if you buy good shares, nobody will stop you from making money. And don't speculate. Speculation is for the people who are useless.
वो कुछ आता नहीं है, चलो शेयर बाजार में चलो, ऐसे ही लोग सब है इधर। किसी को कुछ नहीं मालूम, अंधाधुन सब खेलता है। वो किसी को मार्केट कैप वो पूछ लिया तो ऐसे देखता है कि जैसे गोली मारा उसको। अरे मैं बोला तू इतना बोलता है कि शेयर लेने को, तो मार्केट कैप तो बता। तो बोले पागल है क्या, ये सब वो कौन देखता है। दिस इज द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। सो वी आर amongst lot of fools. We have to wade through it and make money. And with this 15% iteration, I think things are going to be so unnerving for people, but the markets will keep on going up. That's my reading. Thank you for the moment. Srinivasan. Yes, sir. Good evening, sir. Srinivasan, speak now. Yes, sir. I'm just adding speakers. So, Sachin, you want to go first? Good evening, sir. Good evening, Srini. Good evening. सो निफ्टी पे तो मेरा व्यू 18,580 के ऊपर तेजी लगता है। और मतलब थर्सडे का हाई लो इम्पोर्टेंट है, और 18,465 के नीचे वीक है। तो जितना ज़्यादा ऊपर जाता जाएगा अपने लिए तो बढ़िया है, उस वैसे वैसे बेस ऊपर शिफ्ट होता रहेगा फॉर शॉर्टिंग पोजिशनली। तो 580 के ऊपर तो तेज है, तो फिर अगला बेस बनेगा ऊपर, तो फिर देखेंगे। Okay, thank you. Yes, Sam. Sam, बोलिए ना। Sam. Sam, you can unmute your mic and ask. No, our Indian economy. Actually, I was very sure of what's happening, but with all the recent numbers, I feel something is amiss here. Not that it will affect the stock market, please. Economics is such a subject that is to be only discussed, not to be implemented in the stock market. If you will do that, you will lose your pens. So this whatever number, क्या बोलते हैं, GST number, I couldn't fathom how there can be a variation of such a huge magnitude. ऐसा क्या इकोनॉमी में हो गया कि इतना 30,000 कम आ गया, कि उसके आगे 30,000 ज्यादा आ गया। I don't know. See, it is the responsibility of the authorities to iron out numbers without telling the people. It's a done deal everywhere. It's done. It's done. And it's accepted also. But giving such funny numbers, 187 and now 157. So what should I read? If I were the person in charge, I would have ironed it out. 167 and 160 this month. But I think everything is meaningless over here. This GDP number, wow, 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 wow. What is so wow, wow? It's only base effect. Nothing. It would be only 6% or less. So, and that also with the new methodology. So, it's not that we are booming and no, no, no.
We are slow as a tortoise, but very big as a tortoise. That's the only advantage. So, in in this scenario, if you are invested in high growth companies, I'm specifying high growth companies, then you will make a fortune. Believe me, some of the investments I had, not that I have it now, that phase, I think. See, the first phase came in 91 and thereabouts. Then it lingered on. Then the tech boom. Again, so in 2003-4, if you see the rates, my God, things have gone up like mad, mad, mad. Siemens, પાણી જોઈએ છે ને કે Siemens, maybe, I don't know, 400 times or 500 times I had, but I sold it anyway. What not? What was the value of the market? Very less. Maybe 20 trillion at the most. उसका इतना हो गया तो mind-boggling returns. If you were invested then, now I feel that this phase after the COVID, I accept I read it wrong. It's not going to go down in a hurry, and I think I give up. Okay, but if we hover around here, we are hovering around here since October 21 or say July 21. If we एक पेप्सी लेके बर्फ डाल के if we hover around here for another 2-3 years, say maybe 19,000 or whatever, I'm I'm a poor in this Nifty, so please excuse me. But in stocks, I feel best of the stocks will gallop, and whatever ये अभी जो मार्केट कैप है 3 लाख करोड़ आराम से हो जाएगा 6 लाख करोड़ 6 लाख करोड़. Now all stocks will not rise. 90% of the stocks will not rise. Only 10%. मतलब मोटा मोटी. So concentrate on those 10. If you don't know anything, take some help. Go to a mentor. Tell him I want this, this, this. You will make money. But don't experiment on your own. Very honestly, I'm telling you, I have spent 45 years in this market. And I feel I know only 30% of it. And as far as companies go, there are 2-3 thousand companies. ये से तो ज़्यादा है 4-5 हज़ार, बट 2-3 हज़ार जो आप देख सकते हो. Now a single person, how can he track all of them? One can track 5, 10, 15, or one can track a sector. So I have chosen MNC. एकदम इजी में इजी, ज़्यादा अकल नहीं लगाने का. तो ऐसा करो कि इतना पैसा बनेगा कि आप. और एक दूसरा बात है, हाँ याद है, इंडियन रूपी थियोरेटिकली 82.30 या 50 जो भी है. अभी दो बात है जो आप लोग को समझना पड़ेगा. डॉलर रूपी 82.50 है,
इज संदीप भाई को फॉरेन जाने का है, तो 20% टीसीएस बनेगा। कितना? 20% रख दो इधर। तो 20% मतलब वो 16-17 रुपया हुआ। समझो वो 100 रुपया ही होगा। वो बैंक वाला आग काटेगा संदीप भाई को, आया अच्छा क्लाइंट आया, ले सेट 84 में लेके जाओ, दे दिया। नाउ यू आर पेइंग 100 रुपीज, which will be refunded to you after 1 year along with your tax return. Good, good, very good. The gracious government. But what the hell? On the 20 rupees, I will lose 10% interest. So that is 2 rupees. So net, you are getting dollar at 86 now. And, so this is one part. Second part is rupee is losing its value drastically, day in, day out. Fortunately, I have not fortunately, yeah, cafe in front of my house, just bang opposite. A pizza which I was ordering for 160 8 months ago. It's a theater cafe, a lot of youngsters. Few days ago, I ordered 300 rupiah. So I went down and said, "Hey, क्या है?" बोलता है, "साहब 300 रुपया क्या है? वो कुछ भी नहीं है." तो मैं बोला 160 क्या था? बोलते हैं वो वैल्यू था, ये कचरा है. So things are becoming unbelievably expensive because rupee is losing its value. If monetary policy is not okay, I'll forget it. वो कोई सुनने वाला नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला लोग ऐसा. And I'm not predicting a doomsday. No, things will be okay. India is a great country. कोई ना कोई आएगा आखिर में बचा के लेके जाएगा. But until then, a lot of middle class is facing a lot of problems. That's being reflected in the balance sheet of companies like Lever and Dabur. Dabur, the results came, it went down to 500. मैं बोला ये तो गया 300 हो जाएगा, सारा 560 हो गया. मैं बोला भाग इधर से. We are in a very, very funny market. People are interested if prices go down because there is a loss, they buy it. Okay, thank you. बोलिए भाई साहब. Anand bhai, your views are Just give me some time having my dinner. sure, sir. Sure, Good sure. evening. Good evening, Sam. You want to unmute and ask? Hi, hi, hi. Thought there was another Sam. Hi, hi, sir. Just have a. I mean, about speculation. Even if we, I just wanted to ask if there is any precedent anywhere else, like China, Brazil, etc., which are kind of comparable. When the valuations are so high, going higher, how high can it go? I mean, some of the good stocks are at 80, 90, 100, 120 PE. And I mean, buying it now is purely speculation. Uh, and so, is there any precedent anywhere else, like in large countries like India and China, for example, which went from, I mean, it probably went 5 to 10x their GDP over 20-30 year period. I don't know if that is possible with India and all that, but when that happened, and Chinese companies have global market,
massive global market, all manufacturing and all of that. I don't think Indian companies except IT and pharma have a global market. And so, I mean, what are your thoughts on that? I mean, have the P's and valuations gotten so hot in any of these countries uh, from where they are now? See, I'm in no position to answer because I don't know how high it can go or how low it can go. But my take would be that when it stops going up, that time I would be active. And see, this all this theoretical discussion doesn't make money for us. Please, तुम पूछो ना क्या लेने का है बेचने का है. इतना बड़ा बड़ा मैं लेक्चर देने के काबिल नहीं है यार. अपने सिंपल ट्रेडर इन्वेस्टर ऐसा में. Yeah, I got, yeah, no, I agree. I totally agree. I mean, I keep, I mean, trading on the short side, and it's not a great time, but yeah, it's okay. I mean, No. There I disagree with you. Please, I might say Nifty will be 12,000. Okay, but if you check, I would do lot of bullish trades. Hmm. So there is nothing wrong in it, yeah. और बताओ. शरद सर गुजराती बोलू के हिंदी बोलू कृतार्थ बोलू छू हिंदी हिंदी बोलू ओके सर क्वेश्चन वन Yeah. हाँ सर वन क्वेश्चन सर सर Yes, सो KB. हाँ सर सो निफ्टी निफ्टी में सर वो हेजिंग आप वाला बोलते नहीं है यार क्या. हाँ मैं बोल रहा हूँ सर KB आपको आवाज नहीं है हाँ सर मैं बोल रहा हूँ आपको आवाज नहीं आ रहा है क्या मोनिश और मोनिल ओके मेरे को आवाज नहीं आ रहा है सॉरी यार Sharad sir, are you able to मोनिल hear मोनिल KB? हाँ मैं बोल रहा था लेकिन मेरा आवाज नहीं आया सॉरी मेरे शायद शशि इश्यू होगा कुछ Okay, KB, आप exit करके re-enter कर शशि लो and send, and I'll add you. ठीक है सर ठीक है Yeah. सर Hello. Yeah, hi, Shah, sir. Monil here. Hope you are doing good. So my question was with respect to this Kinder Electric Infrastructure Limited. So what's your take on this company? Like the current market cap is around 6,000 crore. So what do you think? Like 2-3 years down the line, is it a good stock to invest? नहीं कौन सा कंपनी. Kinder Electric, sir. जिसका नहीं मैं 250 rupees price है. नहीं मैं सुना नहीं है भाई. आई डोंट नो. So just now you told in the your introductory क्या speech about क्या this बोल रहे. Kinder Electric. नहीं नेवर. No, okay, sure, sir. नहीं डिड आई स्पीक अबाउट. No, I think No, no. I think he's आपको confusing with Schneider Electric. हाँ स्नाइडर हाँ. yes. These I think German there is names. there is some misconception in terms of pronunciation. Yeah, Because I stammer at yeah, times it happens. sure. Yeah, thank you. Yeah, who's Shashi. चलिए राकेश भाई. राकेश गुप्ता. Sir, ये Gadway Technical Fibers, and thank you for Snyder. हाँ क्या बोले. सर एक आई आपको डीएम भी किया था सर, अच्छा फॉर थैंक यू फॉर स्नाइडर.
आपके स्पेस में बहुत दिन आगे सुना था। और ग्रेवेट टेक्निकल फाइबर्स का सर क्या व्यू है आपका? ग्रेवेट किसके ऊपर व्यू है? सर, गार्डवेयर टेक्निकल फाइबर्स। हाँ, नहीं इंडियन कंपनी है क्या? जी सर। हाँ, तो नहीं मालूम मेरे को। ओके, उन्हीं एमएनसी। ओके। KB, if you can unmute हाँ and राजेश ask. भाई बोलिए। Hello. Should I? या बोलिए। Hello. Okay. हाँ हेलो हाँ हेलो जय बोलिए। सर। जैसे अभी मिड कैप ने ऑल टाइम हाई लगाया और स्मॉल कैप ने भी आज वीकली चार्ट पे भी हायर हाई बनाया है, तो इसमें हम और इन्वेस्ट कर सकते हैं या कहीं ये ट्रैप है कोई? मतलब आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, इंडेक्स में नहीं, इन शेयरों में, मतलब जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप ने दोनों ने हायर हाई बनाए हैं और मिड कैप ने तो अरे यार, बट दैट्स अ जनरल इंडेक्स नो। नहीं, जनरल इंडेक्स है तो जो भी उनके लीडिंग शेयर है, मैं तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में, अगर इस इंडेक्स को देखें तो। अरे वो इंडेक्स को कोई भी होवे, डाउन होवे अप होवे, क्या फर्क पड़ता है? आपको शेयर अच्छा लगता है ले लो। नहीं है, अगर ट्रेंड नहीं है, अगर कई बार अच्छे शेयर भी अगर अप ट्रेंड ना हो तो नहीं चलते इतने अच्छे से, और हाँ जब भाई ट्रेंड साहब, अच्छा हो तो गधे भी चल जाते हैं। नहीं नहीं, ये जो फिलोसॉफी है ना, हम्म, ये ट्रेडिंग फिलोसॉफी बोलते हैं। हम्म। इन्वेस्टिंग का फिलोसॉफी बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। थैंक यू। Sharad sir, am I audible? I'm just checking. डॉक्टर वी वत्सल कार्य। You are audible, but I think Hel- Sharad sir not Hello, sir. audible. हम्म, हाँ बोल। What do you think about NCC and Purvankara? सॉरी Hello. यार, मेरा नॉलेज बहुत लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। इट्स ओनली अबाउट ऑल एमएनसीज ओनली मोस्टली, और एक दो Okay. इंडियन कंपनी है, ये नहीं मालूम है मेरे को। Okay. Okay, sir. Yeah. Sharad sir, I just want to check. बोलिए Am और I कौन है? am I audible to you, Sharad sir? अच्छा, मेरा बारी आ गया टू एग्जिट एंड री एंटर। शशि आपका हो गया क्या? बोलिए कोई। कोई बोल नहीं रहा है तो मैं बोलता हूँ। नमस्ते हाँ शरद जी। बोलिए। नमस्ते। शरद जी, आई मीन यू एंड आई हैव बीन टॉकिंग फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। तो आप इनिशियली आई रिमेम्बर दैट आपने कहा था यू डिडंट हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑफ कंपनीज लाइक जोमेटो, बट आई रिमेम्बर आई थिंक कपल ऑफ वीक्स बैक यू हैड चेंज्ड योर व्यू ऑन इट. So just wanted your thoughts on why you changed your view. My breaking point was that government introduced GST on delivery, meaning if you order from a restaurant, Right. then you pay 5% that GST or whatever it is. But if you order through Zomato, additional 18% you have to pay. Okay. Now I thought that would not go well with the customers, but I keep on seeing things now. It has become a way of life here. So I think it's very app based,
I also use that app. It's very fast, seamless. I think it has a scope. So on one of the spaces, I was so much in of that company. I gave a target of 300, but 200 seems reasonable because this brick and mortar stories, steel companies are not going to work now. It's past. Only high tech manufacturing, high tech technology, high tech process companies, they will only work. ये सीमेंट स्टील नहीं चलेगा. So whatever, see again I'm but anyway, all high tech manufacturing is done by MNCs, most of it. तो आंख बंद करके ही ले लो. आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेते हो, क्यों लेते हो? बकवास में बकवास. उससे अच्छा कहना मेटल लो जो वो कंपनी को क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई करता है, वो लो. उसने अभी बेंगलोर में एक नया फैक्ट्री डाला है कहना मेटल ने. तो देखना 6 महीने के बाद में 10,000 हो जाएगा. आ लेना मत. मैं तो ऐसे ही बोलते रहता हूँ, लेकिन 5-10 हजार तो हो ही जाएगा. सर आपके कहने पे RHIM लिया हुआ है. आपने 10,000 का टारगेट दिया था. हाँ, वो है अभी मेरे पास. मैं नॉर्मल था कि दारू पिए था. अब याद नहीं मेरे को. बट फ्रॉम व्हाट आई नो आप ज्यादा दारू पीते नहीं है तो. नहीं, मैं पीता नहीं हूँ. हम्म. बता. अरे हो जाएगा यार, बोलो. नो आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ व्यू सर. वो मैंने लेके मैं भूल गया हूँ. मेरा एक दूसरा एक नहीं डीमैट अकाउंट है, उसमें मैं लेके भूल जाता हूँ. नहीं, वेस्ट लाइफ भी ले यार. वेस्ट लाइफ सी ये थियरी है वेस्ट लाइफ का. मेरा मैकडोनल्ड्स नंबर 1 ब्रांड इन इन फूड चेन इन US और द वर्ल्ड ओवर. सब जगह है. इंडिया में है वेस्ट लाइफ के नाम से. वेस्टर्न रीजन का है, साउथर्न का है. उसके पास फ्रेंचाइजी. वो जितना स्टोर वो खोलने वाला है ना, वो पढ़ के मैं हैरान हो गया. फिर मैं बोला ये इतना स्टोर खोल के क्या करेगा. ऑन एंड ऑफ आई ऑर्डर फ्रॉम देयर. आई लाइक द बर्गर्स. तो मैं प्राइस तो मुझे पता ही नहीं होता है, वो आदमी करता है. फिर बोला कितने का आता है, तो बोलता है ये वाला 80 रुपया है, ये वाला 160 है और ये 300 वाला है. तो मैं सारा 80 रुपया वाला तो सब लोग लेगा ये. तो दे हैव changed their menu to suit to suit the Indian palate and Indian pocket. So the market cap is around 10-12 thousand last I checked. I don't know the price also, but easily it can overtake Jubilant, whose market cap is around 35,000. And another one, Chirag, this Devyani, it will be an outlier. It will be too good. Though I cannot invest in it, but yes. Yeah, Chirag. नो आई सेड वो मैंने IPO से लेके रखा हुआ है. वो पड़ा हुआ है मेरे पास. वो थोड़ा देना मेरे को. अरे सर कितना मेरा क्या रिटेल लॉट क्या लोगे सर लेके. ओके. शरद जी, गुड ईयर पे क्या व्यू है आपका 5-6 साल के लिए?
अच्छा है। नहीं, अगर आपके पास उस सुविधा है तो ये अमेरिका में ही ले लो ना, डिविडेंड यील्ड 6-7% है। यहाँ पे भी डिविडेंड यील्ड अच्छी है इसकी, लास्ट 3 साल 100-100 रुपए दिया है। मार्केट कैप भी शायद 2500-3000 करोड़ है, बाकी टायर कंपनी इसकी 10-15-20 हजार करोड़ है, अपने जो इंडियन है। नहीं, वो क्यों ऐसा है मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी, ये जो इंडियन कंपनीज होती है ना, उनके प्रमोटरों को इंटरेस्ट होता है अपने भाव में। हम्म। ये तो उधर का कंपनी है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए नीचे रहता है भाव। अच्छा, नहीं, बट व्हाट आई हैव हर्ड, इन्होंने अभी ऑयल और लुब्रिकेंट्स में एंटर किया है इंडिया में, एंड सून दे आर एंटरिंग इनटू बैटरीज आल्सो। एक फोसेको देखा हुआ है आपने, शरद जी, फोसेको? हाँ, मेरी टाइमलाइन पे तो है, लिखा हुआ है, 1-1.5 साल पहले लिखा था, और भी लिखते रहता हूँ। बोलिए सर, कृतार्थ हियर, इफ आई कैन स्पीक सर। मेरा सर, मुझे वो क्यूएसआर में तो आपने व्यू बता दिया, वो ही पूछना था इनफैक्ट। सर, क्यूएसआर में एक लास्ट वो बर्गर किंग और रेस्टोरेंट ब्रांड्स है सर, उसमें 140-150 से फंसा हुआ हूँ और थोड़ा कंफ्यूजन है, तो वो एक पूछना था सर। और दूसरा, नहीं 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 नहीं, तो अभी क्या बोले, 120? 100, हाँ सर, 120 122 के 115 के आसपास चल रहा था सर लास्ट में। तो क्या फंसे रहते, तुम शेयर लेते हो फंसने के लिए क्या? नहीं सर, व्यू तो है, लेकिन सर वो लॉस मेकिंग है ना, तो फंडामेंटल्स थोड़ा मैं देखता हूँ सर, प्रॉफिट में ही नहीं आ रहा था, इसके लिए थोड़ा पूछना था। बाकी सर देवयानी तो आ गया, आपने बोला था सर, वो भी है, बट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसीलिए सर, आई मीन थोड़ा। अरे बाय बाय हाँ सर, बाय हाँ बाय सर, बाय, बोलो बोलो सर। इन्वेस्टिंग करते हो ना, हाँ सर। तो एक बात समझो, देयर कैन बी ह्यूज periods of non-activity, ओके सर। डिक्लाइन, हाँ सर। राइज, वो सब कुछ होता है आपके पोर्टफोलियो में है। हाँ सर। तो थोड़े बढ़ेंगे, थोड़े घटेंगे, थोड़े उधर रहेंगे। हाँ सर। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने शेयर लिए हैं कोई भी हाँ सर। और अच्छी नस्ल के हैं, हाँ सर। तो पकड़ के रखिए, छोड़ो ना। क्या भाव देखते हो कि मैं फंस गया? क्या फंस गया? आपको पैसे का जरूरत है क्या? नहीं नहीं, वही सर, इसलिए पूछना था, बिकॉज क्यूएसआर का ही मुझे क्वेश्चंस पहले था, लेकिन उस टाइम पे इश्यू। और सर दूसरा मेटल्स पे चाहिए था, वो साइक्लिकल व्यू नहीं, है, वो आपने बताया है सर, लेकिन। नहीं नहीं, वो छोड़ो, हाँ सर। मेटल के बारे में बात नहीं करेगा, बहुत ओके। बस, ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। यूजलेस, वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ सर, वो यू सर। आर वेस्टिंग योर टाइम हाँ सर। एंड ऑफ एवरीबॉडी। ठीक है। अरे, ठीक है सर। एक बात बता मेरे को, हाँ सर। मेटल में कोई पैसा वाला बना है क्या? सर, वो थोड़ा सिक्लिकल व्यू है, आप बोले थे, लेकिन वही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो पूछ लिया सर। पर काय को ये स्पेस में इतना अच्छा अच्छा शेयर का बात होता है, उधर ये कचरा पट्टी क्यों लाता है? सॉरी सर, लेकिन नहीं नहीं नहीं, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हाँ मेक, सर। आई एम एडवाइजिंग यू, हाँ सर। आई I don't know, means I must be like your age of younger brother, or I don't know what age No, no, sir. you Sir, are. you are like my father's age. Sir, I am 41. I am working in IT industry, sir. So my father is 73, 74 around, sir. हेलो नहीं तो मैं क्या कहता हूँ भाई। सर, नमस्ते। हाँ सर। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए भाई साहब, इनका चालू है। हाँ सर। भाई तू एक काम कर, हाँ सर। अच्छा अच्छा शेयर ले, और भूल जा शेयर बाजार में नहीं, तेरे काम पे ध्यान दे तू। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। बस वही सर थोड़ा पूछना था, तो बाकी सर तो होल्ड तो करता हूँ सर। ठीक है सर, बस, थैंक यू सर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, मेरे को ये पूछना था, आपका मारुति पे शॉर्ट टर्म में क्या व्यू है? शॉर्ट टर्म में ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा सर?
अच्छा, जैसे मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, मैंने इसकी पुट बाय करी थी रिसेंटली, तो उसे एग्जिट कर देना चाहिए। 9,000 की पुट थी मेरी। वो तो भाव तो 9500 है। हाँ, आज 95 चला गया सर, कल 92 के हाँ, तो अराउंड आया ऐसे ही था। वर्डलेस। अभी मंदी भी आएगा तो कितना आएगा, 100-200 रुपए। हाँ 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 हाँ, तो मतलब एग्जिट कर देनी चाहिए अपना ये, और लॉन्ग का व्यू बनाना चाहिए इस मारुति पे। आज क्या भाव था पुट का? आज पुट थी मेरी 9,000 की पुट सर, ये 34-35 रुपए तक चली गई थी। और आपने कितने में मैंने ले लिया सर था? 67 में खरीदी थी। हाँ, तो डबल बेच दो। डबल? बेच अच्छा, दो। बेच दूं डबल? हम्म, ठीक ठीक ठीक, ठीक है सर, यही पूछना था आपसे। हाँ देखो, जी। एक एक बात हाँ जी समझो, सर। ये फ्यूचर्स मार्केट है। क्या है? फ्यूचर्स मार्केट। फ्यूचर। इसको बोलते हैं फाटका, हाँ फाटका जी। सट्टा बोलते हैं। अच्छा। खेलना है तो क्या बोलते हैं, इस पार या उस पार खेलो, हाँ जी। ठोको, ले, कुछ भी करो, पैसा जाना नहीं मानता है। अगर मैं आपका टीचर होता ना तो थप्पड़ मार देता कि नहीं 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 नहीं, आई विल हाँ जी एक्सप्लेन हाँ यू जी दैट। सर। ये 67 का 34 जब हाँ हुआ, जी उतना टाइम आपने किया क्या? सर, दिक्कत ये हुई, मैंने 67 पे लिया था, और मैंने इसका स्टॉप लॉस भी लगाया था, जीटीटी टारगेट लगा दिया था एक्चुअली मैंने, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करी थी मैंने अपनी पोजीशन। हम्म, तो जीटीटी, ये क्या हुआ कि कल न्यूज आई कि मारुति की सेल 10% अप हुई एक्सपेक्टेड से। हम्म, तो वो जीटीटी क्या हुआ, मेरा 64 रुपए का था स्टॉप लॉस, जो मार्केट उसके जो आपका चार्ट के हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। तो 64 रुपए का स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस लगा ही नहीं, वो वैलिड ही नहीं हो पाया, वो सीधा सीधा 56 रुपए पे एकदम से ये नीचे गिर गया। हाँ, तो वो जब भी हुआ हाँ ना, जी तो 50 करके बेच देते ना, डेढ़ा क्वांटिटी। सी, वही बोलता हूँ, ये आप लोग फाटका खेलते हो, हाँ जी लेकिन आप फाटके में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो क्योंकि आप में वो खूंखार नेचर नहीं हाँ है जी, कि मारना ही है सामने वाले को। आपका नेचर है मार खा के आ जाते हो। ये सच्चाई है सर, इसी पे यही गुण हम्म। चाहिए मेरे को, आप इसमें अगर हेल्प कर सको तो, मतलब अब क्या, कैसे अपनी साइकोलॉजी कैसे बदलें इसमें? अरे मेरा कोई साइकोलॉजी नहीं है, एक ही साइकोलॉजी है, शाम को क्रेडिट आना चाहिए, कॉल बेचो, फूड बेचो, कुछ भी माँ बहन करके, डेबिट नहीं मांगता है मेरे अब मेरे को आप क्या सलाह दे रहे हो इसमें, मैं इसकी जो कॉल को मतलब एवरेज नहीं करूं इसकी? को। तुम यार, तुम कितने साल से सर बजाते मेरे हो? को अभी 1 साल ही हुआ है। तो रहने देना भाई, ये फाटका मत खेल तू यार। Sharad ji, if I may, या sir, the first rule of the market is you never average a losing trade. ओके, आप losing trade को average नहीं कीजिए, दूसरा trade सोचिए। ठीक ठीक है सर। नहीं, भाई तेरे पास में मार्जिन है कितना है? मेरे पास मार्जिन मैंने सर, मैं सच बात बताऊं, मैं 1.5 पेटी लॉस में हूँ ऑलरेडी। नहीं नहीं यार, वो छोड़ना, मार्जिन कितना है तेरे पास? मार्जिन एज इन सर? हाउ बैलेंस मच कितना मनी? है आपके पास मार्जिन अकाउंट आई में, हैव बैलेंस कितना है? 50,000 राइट नाउ। तो एक काम कर, तू ये पूरा कर दे, और ये फ्यूचर मार्केट को छोड़ दे यार। काय को करता है 2 लाख उसे, काय को करता है, मरने का है क्या? आपका पैसा थोड़ी है, आप जो घुमा लेते हैं, हम्म आपका फैमिली का पैसा है। हम्म। तो इक्विटी करना चाहिए सर? यस यस। ठीक 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 है सर, थैंक यू सो सर जी, मच। सर जी, सर जी, एक हमेशा याद रखना, आपके जो ट्रेडिंग डेस्क है ना, वहां पर एक चीज रखना, लूजर्स, एवरेज लूजर्स, बराबर?
और मैं बोला लूजर्स, एवरेज लूजर्स, वो आप रख देना, कभी भी आप एवरेज नहीं सर कर धीरे पाओगे। धीरे ही बंदा सीखता है। अब गलतियां कर रहा हूँ थोड़ा सा, नहीं नहीं, आप आप लोगों से रखोगे तो भी आपको सीख याद रहा हूँ रहेगा। कैसे नहीं थोड़ा नहीं, सा आप अपने को रखोगे तो सुधारूं। आपको याद रहेगा, आप रख लो, आपको याद रहेगा, क्योंकि हमने कल रात को क्या खाया था ना, वो भी अभी याद नहीं होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए, थैंक यू। या शशांक। Yes, good evening, everyone. Basically, I have one question to you. When there is a in India, the valuation, banking valuation is too high, but when government is saying that your money is not safe in the सुषमा भाई, bank. आपकी आवाज नहीं आ रही है। Am I audible now? हेलो। या Yes. So basically, my question. या सतपाल जी बोलिए। नहीं एक मिनट नहीं अनंत सर। नहीं, ये शशांक भाई बोल रहे थे ना। नहीं, वो गए ना सर, उनकी आवाज नहीं आ रही थी, कनेक्शन अच्छा। इश्यू है, वापस ले लूंगा मैं। हम्म। सतपाल जी बोलिए, माइक अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर सरद सर और सभी को मेरा नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, एमएनसी आप एक साल के लिए कौन सी बताओगे जिसमें इन्वेस्ट किया जाए? एक भी नहीं। चलो धन्यवाद। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक साल के लिए नहीं होता है। अच्छा, दो या 3 साल तक का? नहीं नहीं, अगर वो ठीक है आप बेच दो एक दो साल में, लेकिन अगर आपका नजरिया 10 साल से कम है हाँ सर। तो मत लो, क्योंकि इतना पैसा आ जाएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो आपको क्यों चाहिए इतना पैसा? ठीक आप है सर। समझे क्या? नहीं, मैं इतना ज्यादा नहीं समझता सर, थोड़ा ही समझ पाते हैं, सीधा सीधा सर अरे समझ। मैं बोला आप 10 साल रखोगे ना, हाँ सर। तो इतना पैसा आ जाएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो ये तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो आप रख लेंगे सर, फिर तो अगर आ रहा है तो। नहीं, आप ढूंढो एक दो साल वाला अच्छा शेयर ले, और पैसा बनेगा। सतपाल सिंह, विश्वास रखो इक्विटी पे। नहीं तो वो अच्छे का ही पूछ रहा था सर, कौन सा लेना चाहिए? आप अभी कुछ एमएनसी की बात कर रहे थे, मैं बाद में ज्वाइन हुआ। नहीं, मैं एमएनसी के बारे में बात किया सर लेकिन बिना पैसे लिए हुए मैं नहीं बताऊंगा। तो पैसा कितना? 4 लाख रुपया। अच्छा मजाक करते हो आप। ठीक है, आपको मजाक समझे तो मजाक, नहीं तो जो भी चलो है। कोई बात नहीं सर, आपके ही हैं ये भी, इसमें क्या दिक्कत है? चलो ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। सतपाल जी, आप है ना, आप अगर आपको मेहनत करनी है ना, तो आप स्क्रीनर ऐप जो है वो डाउनलोड कर दीजिए, उसमें इंडस्ट्रियल सर्च कीजिए। हाँ ओके, सर। तो इंडस्ट्रियल्स में आपको मिल जाएगा जो नहीं भी नहीं आपको। नहीं नहीं, सतपाल सिंह, सर ये जो मेरा टाइमलाइन है ना, हाँ सर। उसमें चले जाइए, लिखे हैं मैंने सब शेयर्स। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। 40,000 दे देना। हाँ हाँ, सर। मैं बोला 40,000 दे देना बाद में। नहीं जरूर नहीं, सर जरूर। सब शेयर्स मैंने लिखे हैं। ठीक है सर, ठीक है। या। बाकी आपको अगर वो भी कष्ट नहीं लेना है तो मेरे पिन ट्वीट पे भी देख सकते हो, मेरे प्रोफाइल पे। किस नाम से है सर आपका? गोल्डन आई? यस यस, वहां पर पिन ट्वीट है, वो भी देख सकते हो आप। बट रिस्क रिवॉर्ड आप खुद का है, वो 2-3 साल के परव्यू से मत देखना। सर ओके, ठीक है सर। हाँ ठीक सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। सतपाल सिंह, सर 10-20 करोड़ आवे तो दारू पिला देना, उतना तो कर पाओगे? पक्का सर, पक्का। 10-20 करोड़ जिस दिन आएंगे उस दिन तो
घुटनों के बल आ जाऊंगा मैं आपके पास, और बोलो। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट इन लाइफ, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ समझ। या रन सर। गुड इवनिंग बॉस, गुड इवनिंग शरद भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा दुखी हूँ यार आज। हमारे शरद भाई बोल रहे हैं मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा। यार शरद भाई, आप जैसे हार्डकोर बंदड़िया अगर तेजी बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? एनीवे, टेक्निकली मार्केट और ऊपर जाएगा। दैट इज व्हाट आई हैव बीन रिपीटिंग फॉर द लास्ट 1 वीक। पर फंडामेंटली इसका कोई बेस नहीं है, फंडामेंटली कुछ नहीं दिख रहा है। बट टेक्निकली पैटर्न कंप्लीट नहीं है, और ये पैटर्न तभी कंप्लीट होगा जब ये निफ्टी 19,200 19,400 लगाएगा। तो 19,200 19,400 तक एक्चुअली वी शुड ओनली बी थिंकिंग ऑफ लॉन्ग्स, वी शुड नॉट बी थिंकिंग ऑफ एनीथिंग शॉर्ट। एंड वापस आया आपका आज का टाइटल 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 6 मंथ्स डाउन द लाइन निफ्टी 10,000। there is very little left in the market। अभी जितने मंदड़िया है, जितने भी मार्केट गोइंग डाउन डाउन कर रहे हैं, ये सब पलटेंगे अभी। 18,800 इज क्रॉस। लास्ट 500-600 पॉइंट में आके सब फंसेंगे। Everyone in the country will, I am expecting most of them will start looking at upsides only, and fundamentally there is nothing, especially with inflation coming down। एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इन्फ्लेशन नीचे आता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा, ये होगा वो होगा, वॉट एवर थिंग्स। but this interest rate currently coming down is going to go down further, which is what gold is also showing। gold, as I said, हाँ अभी फंडामेंटल पे आ रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड ट्रिपल टॉप लगा के नीचे घुमा है। वैसे ट्रिपल टॉप इज नॉट कंफर्म, बट दिस इज इवन बिफोर द ट्रिपल टॉप वाज पोस्टेड, पैटर्न बोल रहा था कि मैं ट्रिपल टॉप लगाऊंगा इस बार, और ट्रिपल टॉप लगा के नीचे भी वापस आज 1950 के नीचे आ गया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड टू गो डाउन टू 1600। तो अगर गोल्ड 1600 गया तो इन्फ्लेशन बहुत नीचे आएगा। इन्फ्लेशन नीचे गया तो डिमांड विल कम डाउन, एंड डिमांड कम होगा तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ रिएक्शन इन द मार्केट। बट ये जो रिएक्शन आने वाला है वो इट विल ओनली कम आफ्टर निफ्टी पोस्ट 19,200। मैं हर बार पैटर्न 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 चिल्लाते रहता हूँ, गला फाड़ते रहता हूँ, बट कम लोग सुनते हैं। तो 16,800 से जो ट्रैप किया, अभी वापस 1800 पे एक बड़ा ट्रैप आएगा वापस। दैट शुड मोर और लेस बी द लास्ट ट्रैप फॉर द मार्केट। उसके बाद में मार्केट शुड डिक्लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो राइट नाउ जब तक चल रहा है चलने दो। 19,200 19,400 का ट्रेंड लाइन के आसपास से भी आके ट्रेंड लाइन टेस्ट करेगा, तब एक नया व्यू लेना पड़ेगा। तब तक के लिए इट इज लुकिंग वन साइडेड अप मूव ओनली, there's nothing else। एंड जैसे इस वीक में मंडे पोस्ट किया था 19,200, या इधर ये वीक आएगा या नहीं तो अगला वीक छोड़ के उसके बाद वाला वीक। So don't expect the 19,200 to now be posted in the next week, but the week after that 19,200 19,400 लगने जैसा लक्षण लग रहा है। In fact, when the market was closing today, I took a lot of 18,600 calls, and this is my personal trade। मैं कोई ट्रेड सजेस्ट किसी को नहीं करता। तो मेरा पर्सनल ट्रेड है। 18,600 का कॉल लेके गया हूँ आज घर पे, वो भी ट्वीट किया था। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मंडे 18,700 के आसपास आ जाएगा, एंड वी विल एनीवे सी अ हायर मार्केट नेक्स्ट वीक। 18,800 18,900 एंड 19,200 द वीक आफ्टर दैट। दैट इज माय व्यू। आनंद जी, आप ये होसोडा वेव्स से करते हैं कि कैसे करते हैं? क्या? There is a concept called Hosoda waves, no? There was a Japanese researcher who used to do. Oh no, I do many things। Don't ask me what I do, because my study is very different। It is based entirely on my own research of the last 30 years। So I mix a lot of things। I mix Elliott, I mix GAN, I mix stochastics, I mix Bollinger, I mix quite a bit। So don't go by one particular thing।
जो मैं व्यू देता हूँ नॉर्मली मार्केट बिकॉज टेंड्स टू अग्री विथ मी इन द लॉन्ग रन मे बी 1 or 2 days in between shorter term I do make some mistakes but more or less my system is entirely different. I don't follow any of the one particular system. मेरा system मेरा है अलग ही है. Right, sir. Thank you. I differ with Anand on not on Nifty level, so ठीक है. But about gold, I very honestly feel gold in next 5 years will be 3,500 or 4,000. अगले 5 साल ना सर 5 साल के लिए तो मैं भी तेजी में हूँ. अरे हाँ हाँ no, let me give a reason for this. हाँ. Because now whatever gold is mined and produced, the demand is more. And recycled gold also is trending downwards. So just because there is no supply, it will go up. Secondly, about Nifty, okay, I say bullish or whatever, but heart in heart, I feel 12,000 is imminent. But looking at the present scenario, what I understand is whatever will happen to Nifty up or down, there are few set of stocks which are going up by leaps and bounds, and plenty of stocks are getting dead by the day in Right, Nifty. right, So, correct. so my thinking is for an average player, and see, I'm also an average player. I don't play Nifty and Bank Nifty. I don't like it. Right, But I'm saying bullish because there are 20% of stocks in Nifty which will grow by 50% or 100% in next year or two. So one right. can focus over there irrespective of the level of the Nifty. Correct, correct. Agreed. और मेरा और भाई साहब, the owner of DMart, we are good friends. Mm-hmm. हम लोग का एक ही पेटेंट डायलॉग था. हाँ, कुछ हाँ ले लूंगा. अरे वो अचार लाओ अचार. हम अचार लोग हमारे को भी भेजो भाई. हाँ बेचता हूँ. वो हम लोग का एक पेट डायलॉग था कि हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी. सही है. हाँ, नाउ दिस प्रोसेस, दूध का और पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी, it is always ongoing. You might not realize, correct. but it Yes, is happening every moment. yes. So if you are stuck in a Dutch share, you are gone. Your time value is lost. And it's not necessary that they will come up again in life. Yes, correct. Agreed. So instead of talking Nifty levels, Yanand bhai, if you suggest few good stocks to people over here, One of the most, I mean, which I personally am buying. See, मैं किसी को advice नहीं देता. मैं क्या कर रहा हूँ वो अरे बोल don't सकता हूँ. give caveat ना, हाँ, छोड़ना वो सब यार. हाँ, तो मैं यूपीएल भर रहा हूँ. मेरे को यूपीएल में बहुत भयंकर तेजी दिखती है. मैं एनटीपीसी ले रहा हूँ. In spite of people talking about what environment friendly and all, मेरे को पता नहीं एनटीपीसी का चार्ट बहुत अच्छा लगता है मल्टी ईयर. So I am buying NTPC, but my views are 10 years down the line. So apart from these two, there are a few which I don't want to talk about, but these two are major. Why? अरे सर चार्ट देखना पड़ेगा. अच्छा. आज मैंने क्या किया वो बता रहा हूँ. आज मैंने कुछ यूपीएल लिया, आज मैंने एनटीपीसी लिया. मैं तो ऐसे एनटीपीसी 80 रुपए से लेता ही रहा हूँ कंटिन्यूअसली.
I keep buying every time थोड़ा पैसा आया 10,000 रुपया आया मैं एनटीपीसी में डालता रहता हूँ 10 पिछले 3 साल से तो डाल ही रहा हूँ तो my buying system my long term investment is very different I do in very small bits I don't do big numbers in one shot तो खरीदते खरीदते मेरे पास 10,000 एनटीपीसी हो गए ऐसा चलता रहता है तो वो 17 लाख का हुआ 10। हाँ 10,000 डालो तो और कितना होगा 3 साल में और 17 लाख थोड़ी डाला मैंने ज्यादा से ज्यादा 10 लाख डाला होगा क्योंकि मैं 80 से बाय कर रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म व्यू इट इज वेरी डिफरेंट but truly speaking, whatever you say, I agree with you 100%. Nifty is a different animal. Nifty will play its own chart. Other stocks will play their own chart. जरूरी नहीं है कि निफ्टी अगर आधा हो गया तो the stocks which are good will also come collapse by 50%. They may only come down by 25%. It is very possible. And when market as the index starts coming down and everything looks bad, not everyone will come down. 2020 was an exception when everything was hammered down. But that exception has been proved by taking off. But पर अभी हाँ अभी हाँ cost of playing one Nifty is 5 rupees. तो सर बराबर सर मैं अरे तुम सब लोग अमीर है मैं कड़का है मेरे को नहीं पड़ता है भगवान आपके जैसा कड़का सबको बना दे ऐसा नहीं सर पब्लिक निफ्टी बैंक निफ्टी खेल रहा है आजकल यू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग एवरीवन ओनली टॉक्स अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मैं इतने वेबिनार करता हूँ जब बोलता हूँ ये स्टॉक देखो वो स्टॉक देखो सर ये सब छोड़ो मेरे को निफ्टी बैंक निफ्टी बताओ इट पीपल हैव बिकम क्रेजी एंड फैनेटिक अबाउट निफ्टी एंड बैंक I have another take. Yeah. गवर्नमेंट को 40,000 करोड़ रुपया चाहिए तो बोला डालो निफ्टी फिर बोला बैंक निफ्टी फिर बोला फिर निफ्टी ये निफ्टी वो निफ्टी साला पूरा पब्लिक को जुगारी बना दिया बराबर है तो और हम तो पूरा सब किया है सब लाइफ में किया युवा खेलेगा अब मर जाएगा सर एक बात बताओ आप पिछले 50 साल से खेल रहे हो मार्केट मेरे को 35-40 साल हो गए जुआ खेलने वाले कब नहीं थे नहीं आप एक बात समझो भाई बहुत ही समझो पहले एक्सेसिबिलिटी नहीं था जब रिंग में चलता था एक मिनट सुनना जब रिंग में था ना नहीं था इतना फिर ये एक कंप्यूटर आया वो थोड़ा बढ़ गया ओ फिर ये 2014 से शुरुआत हुई सब लोग आ गए वाह मोदी जी वाह करके बस मोस्टली अभी जो फंसे हुए हैं ये सब 2020 एंड ऑनवर्ड्स वाले हैं एंड ऑप्शन राइटिंग इतना हेवी कौन कर रहा है मोस्ट ऑफ देम इफ यू लुक एट दे आर ऑल 2020 ऑनवर्ड्स the experienced players like you and me we don't even look at writing such kind of options we don't look at the 2 रुपए में 5 रुपए में ऑप्शन थोड़ी लिखा जाता है पब्लिक लिख रहे हैं आज भी लिख रहे हैं so let them अब every kind of person market है सबके लिए एक प्लेटफॉर्म देता है देने दो okay now we'll curtail this yes let's move forward message or of this discussion is buy good shares correct and any conclusion of discussion will be only one buy good shares I'll give you an example 2003 में मैंने 100 शेयर खरीदे थे माइको के 4,000 रुपए में उसका स्प्लिट और बोनस सब होते आज मेरे पास आई हैव अबाउट क्लोज टू अबाउट
2,000 plus shares of Myco. And you're trading at 40,000 rupees. Now, उसके बाद में 4 लाख रुपए डाला, 4,30,000 डाला था उस टाइम पे 2003 में. आज उसका वैल्यू क्या है वो भी नहीं देखता हूँ. So these are extreme long term which you, if you play, you will definitely get a lot of money, a lot of wealth. No, I am not chartically inclined, or I don't understand charts. Right. Whatever I share over here is my experience and some advice that how money can be made very easily. It's no rocket science, please. छोड़ दो ये सब नॉइज. डॉलर इंडेक्स ये वो सब आ जाता है पूछने को. वर्ल्ड ओवर में वो एक भाई पूछ रहा था, अरे भाई मेरे को शेयर इंडिया में लेने का है, इधर मेरे को क्या करना है, चाइना बड़ा घटा. सर, आपको इफ यू रिमेम्बर लास्ट 3-4 स्पेस में मैं ये बोला, भाई आप लोग कल सुबह उठ के मार्केट क्या होगा देखने वाले हो, तो ये फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल रीजंस क्यों देख रहे हो? दे हैव नो बेयरिंग एट ऑल एट व्हाट विल हैपन टू द मार्केट टुमारो एंड डे आफ्टर. If you're looking at a year down the line, can you think of fundamentals? The only other person वो विवेक मशरानी को देखा है who has been able to combine both fundamentals and technicals together. He's brilliant. भाभी को पूछना. So, but not all of us are able to do that. So I remain a pure technical investor and a technical analyst. Other people who are interested in fundamentals can look at it. नॉक करना. अरे Anyway, चलो मेरा तो हो गया, किसी को बोल. शरद जी, आपने डीमार्ट की बात की. Any thoughts on this thing? Adding it? I mean, I know the standard rule is buy if you like it, but any thoughts on the current level and any other things, views? नहीं, I will pass this. Okay, sir, got it. Yeah, Darshan ji. अब भाभी उठे. Darshan ji, good evening, sir. Hi, Shahad bhai, how are you? Hi. Who's this? Darshan engineer, sir. नहीं तो मोबाइल बंद आता है तुम्हारा. Sorry, can't. और दर्शन, How are you, sir? your mobile is off. No, is it? Yeah. You can't hear me? No, अभी नहीं. Your mobile is off, I said. I called you couple of times. Oh no, I think maybe it must have been a phone problem because I नहीं can't. बिल नहीं भरा, ऐसा मैसेज. Well, that is quite likely. It happens very often. Good, sir. So, just good to hear you all after a long time. Markets are in a good shape, but I'm going to highlight to you one very interesting development since you continue to advocate buying good fundamental stocks. I think I'll just share one very interesting bit. So, as the Prime Minister of India is scheduled to visit the US, one very key development which has been highlighted in a lot of editorials, including in today's paper, is a potential transfer of technology of GE engines, effectively, jet engines, which will be used in applications like the Tejas LCA. Now, why is it relevant? One, of course, is that typically these are tech transfers with military applications, which usually are not necessarily allowed by governments. But effectively speaking, by this tech transfer, there's a meaningful shift in, if it goes through, of the US military establishment willing to share technology with you, and India kind of, moving out of a potential Russian ecosystem of military equipment. Now,
this is my belief that if you are aligned with power, which one may debate, people have been debating about this dollar no longer being the strong currency and reserves being moved out. One may keep debating it, but the point is that at this point of time, there's no alternative visible in the immediate short term. There could be some in the future, I wouldn't know, and maybe it will be good, but I don't know. So when you shift out of an ecosystem of the Russian to a US ecosystem of military, I think commercially it makes for great opportunity for India as a potential counterparty on trade with the US. Eventually, what one can't take away is that it is the world's largest owner of IP rights, be it your Google's, Yahoo, XYZ, to also owning some of the best tech in the world, to also being a country which is very opinionated and has its own currency. But I think that's a very phenomenal, large change. Now, the only problem with all this is that 2024 we have a potential, political climate which may heat up, but that's not necessarily the conversation here. But I think that's one very important thing. And if you look at the recent quarterly numbers, and if you look at one particular area that we've spoken in the past, which is effectively, this converters of steel, if you remember, sir, last year we were terrified, and in fact, I was also, with energy prices in Europe. The converse today is that energy prices in most parts of the world are being supported only by supply constraints. You're cutting supply so that the prices remain, slightly firmer. So you have OPEC plus. Now you have Qatar actually going and signing a contract with, Bangladesh. Qatar maybe 6 months ago would not have been happy to even deliver on Indian contracts. But now today they're going down to a Qatar, to a Bangladesh and saying, no, we want to be a counterparty to your LNG supply. So, there's a significant shift. And I think there is a nice and potential shift in this whole ecosystem of manufacturing. So clearly you mentioned in your calls on, on Metal, but I think there could be many more companies out there which, like for example, there'll be a company like a PCBL, debatable whether it merits investment or not. But the fact is, it puts 1,000 crore rupee capex behind it, and is now ready for the environment ahead. Or there could be, high precision engineering companies. There could be many. Just very difficult for me to identify one for you in particular. But Kena Metal is, like, for example, a supplier of to a potential aerospace player. There could be an Access Gate, which could be a large counterparty on the ENRD space to an Airbus of the world, or there could be, there could be a whole lot of things. But I think this whole India visit to the US, and if it actually translates into a large commercial value, you're going to have a pretty interesting opportunity of stock picking ahead. And more they come in, they also bring great manufacturing practices into this country. Like, for example, sir, today at this point of time, we are grappling with, this whole green ecosystem. Like, for example, I've been unfortunately caught up on the wrong foot on, I don't think I'm caught on the wrong foot, but I still think that Sterling and Wilson is a solutions company on the green energy space. Unfortunately, for reasons that I have no answer for, it's one of the significant underperformers in the market, though it's a Reliance-owned enterprise. So there could be, a whole lot of these things that will look very interesting in days ahead. And one other thing which is important, sir, is in the recent days, the fundamental data out of US and Europe and including UK, two things. The CPI, WPI is on a decline, though unemployment remains strong. So you actually could land up in a situation where you might actually be doing well economically, because prices are stable and steady. The central bankers may not be in a mood to push higher rates, and it could be a win-win. So it's a very interesting time. And for example, I just want to give you a little small note, which is actually a negative piece, but you must
For those who have inclination, in Financial Times of this past week, there was one infographics on the front page. This front page infographics was about retail prices of milk in the UK. So what it does is the selling price of milk in a UK supermarket minus the cost of acquisition of milk in the farm gate in UK was plotted. And post COVID, the profit margin or the gross margin as reflected by this spread in UK is up by 35 percentage points for the supermarket chain. Now, in all these countries, this profit driven practices of the business houses have caught the scanner and the radar of the governments. So you in Australia today, you had a 5.75% hike in minimum wages, but then the government is realizing that, hang on, boss, that we are also facing a situation where 7% CPI is because the guy who's selling the product to you, who's the end, who's a B2C player, who controls that part of chain, his profit margins are up as much as 25 to 35%. So, assuming that minimum wages can never be rolled back, but if margins get rolled back, I think you might just be in a sweet spot of consumption over the next 3-6 months, maybe longer. So I think it's an interesting place to be in. I don't know, sir, about index and all that. I'm terrible at it. I've only lost money trying to gauge where it will go. But I leave it best to people who understand it. But at the same time, I think that great stocks will continue to make money. And one interesting bit was in today there was an infographics of some nearly 100 companies in India which have been 10 baggers over the last decade or more. I think one of those write-up was there in today's paper. I don't remember that article. So I think it's best that people focus on picking up great companies and that's my limited point, sir. I'm happy to discuss something else if you have in mind. No, I made a point Yes, sir. that one has to invest in advanced technology manufacturing, Yes, sir. advanced technology process. Right, sir. Money will be made there only. ये बैंक लेके कुछ होने वाला नहीं है भाई. I know, but unfortunately, sir, we all get caught by it and we are fascinated because it's 37% of the index. Sir. That's the only problem. And it takes away so much of people's time and energy that they don't realize that a whole lot of great companies, like for example, so today, just at the club today after a game, somebody was telling me that this whole Adani issue has created so much of a problem. So, I told him that, look, unfortunately, you are focused on Adani issue even after a game. Most of his business is a regulated return business, right? Be it transmission, be it green energy, be it his power plant, be it gas business. They're all regulated return businesses. So I said, one can debate why they're trading at 5 times and 6 times book for a 12%, 15% ROE regulated dhanda. I said, I don't want to get into a marital discussion. But I said, well, there's so many other things which are doing spectacularly well. I said, why don't you try spending time focusing on those? But that's the nature of this beast, sir. People get fascinated by what they think is a great conversation, sir. No, and also I don't know whether you heard me or not. No, I heard you, sir. Today the whole conversation I've been on the call. Okay. And how was this Anup engineering thing? Sir, I'm up. Well, sir, unfortunately, it's run up too quick, too fast. Again, sir, as I said, no, sir. If you look at it, sir, I just mentioned one thing. A lot of companies in the engineering space, manufacturing space, including chemicals, specialty, sir, a large part of the gross block is behind them. Now, effectively speaking, sir, when the gross block is like, for example, dynamic products, sir, if you remember a few years ago, we had spoken about dynamic products. Then he set up to do a large gross block. Privy set up to do a large gross block. Now, typically, sir, what happens is that all these products, which are effectively supplies to an MNC, require between 6 months to maybe as much as 18 months for a clearance or acceptance of that product by that particular MNC. But when you build the plant, sir, you capitalize it, you have your depreciation hitting a line, you have your interest cost hitting the line, and once the plant is up and running and available for utilization, it's a fully manned operation. So, your fixed costs are high.
So the operating leverage cuts you the other way around in the initial period. And then the cycle turns. For example, in Anup Engineering, sir, brilliant order book. The Kheda plant is up and running. I think similarly in case of PCBL, a crazy 1,000 crore rupee capex of Tamil Nadu plant is behind it. So there could be many more companies. Unfortunately, what happens is that unfortunately, I'm only speaking about what I've read in the recent times. But there could be many more such companies where large gross blocks are gone. Like for example, people say why markets are running away. But tell me, sir, how do you deal with a scenario where corporates are deleveraging, corporates' gross blocks are going online, cash flows are getting better, they are doing gross blocks without dilution, which effectively means that the free float or the float of equity in the market is anyway shrinking, though you're putting on new gross block. So the supply of equity as a product itself is shrinking in this country. No, that's what I said. There is no liquidity in the market. Yeah, so malat nathi. So if you own great companies, you may be very tempted to think, this is trading at 20 and 25 times, but these are 18%, 15 to 18% ROE businesses, which are going to grow at between 12 to 12% is a nominal GDP growth rate, I'm assuming, sir, will grow at between 12 to 15%, non-dilutive, and having in excess of 15 to 18% ROE, sir. But the companies are floating stock is nothing. They don't need money to grow. They don't need money to do gross block. No. So I'll give you one more interesting company. Sorry, I interrupted you. One last company I'll talk to you about, sir. This is a company. Please bear in mind, sir, that all these names which I have mentioned, I have a vested interest, and everybody should respect that and take great abundant precaution before believing what I'm saying. But I'm going to tell you one very interesting company, sir. This company, I'm just giving you the bare statistics, sir. This company makes a 38-39% ROE. It's a casting business. Has two certifications which are very relevant, which has got in the recent times. One is an ability to serving castings for the Indian Army battle tank. B, for the American railroad business. It operates at a 54% capacity utilization and makes a 38-39% ROE. Now, this company trades at about 10 to 10, 12, I think, I think 10 to 12, trades at a multiple of P multiple of 10 to 12 times. Very boring company. But, sir, I'm just saying that if a company has 38% ROE, in 3 years' time, the book value will double. And it does a sterling 20, 24, 25% EBITDA margin, which effectively means it's not a run-of-the-mill product. So there are many such companies out there, sir, which I think, maybe, we are transiting now from buying the index. The index will remain vitiated by EPFO buying the Nifty ETF, which it is constrained to buy because the mandate to have about up to 10% equity in the EPFO accounts. And that will remain distorted. So for me and you, sir, who are looking to invest our money, we unfortunately cannot look at Nifty as an index anymore, to my mind. I think, people spend a lot of time and energy doing it. Maybe they're right, and maybe it offers great trading opportunity, but unfortunately, I like to give due credit to them. I'm poor at it, so I unfortunately don't spend my time You around are it. being modest. Nobody makes money. Everybody comes here and do blah 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 blah. होगा 2-3 आदमी लोग 100 में से. It's impossible to trade. So my view is, sir, कि अभी बड़ी company या 38% ROE से 12-15% नो multiple से. मुझे बताने किए नहीं यार. So I think these are great businesses to be in, sir. No, but what's the name of the company? So this company, sir, I'll be very honest with you that the transaction which is in the works is a company called Steelcast. It's just see the numbers, sir. I mean, I've been tracking for a bit now. You look at the numbers, sir. Just look at the numbers, and Bhavnagar-based company na, Darshan bhai. हाँ जी. Look at that man. That Chetan Tamboli is call you Yes, here. Tamboli casting. 38% ROE करे छे. Where am I going wrong? I'm not able to figure it out. They are super promoters. I have met them personally. Even this Hester Bayona, Rajiv Mehta is also on the board. Yeah. Again, that Rajiv Bhai himself is a spectacular entrepreneur. What he's managed to do at Hester Bio is an eye-opener. Darshan. Yes, sir. I saw the results of
is jacked this time. Fabulous numbers are fabulous. Do you think it has turned around like what we were waiting earlier? Sir, the biggest problem in that company was this Philippines plant, which is now done and dusted, sir. It's up and running. Okay. It's done and dusted. I think everything is behind it. The promoter, Mr. Puri, is an exceptional man, sir. No. Sometimes I think that people should bet on the promoters because, every time you look at the numbers of companies which are engineering, past legacy order, mistakes happen. But I think you should trust the promoter also, to my mind, because the promoter in India, where the promoter owns 50% and more of the company, it is his skill set that matters more than anything else. Yeah. So I'll give you another, sir. Again, all these are fishing ideas. There's another speculative idea I'm just sharing with you. So on 30th of May, there was a company called R Systems. I don't even know what it does, sir, but somebody just highlighted to me that one gentleman by the name of Nitish Bansal, a 23-year veteran of Infosys, has joined the company as a CEO. This gentleman, sir, is now going to run our system, which is a Blackstone-owned enterprise. Yeah, it is. Yeah. Now the other Blackstone enterprises, sir, are things like Memphis's and there are things like EPL. But this is a new company that Blackstone has acquired called R Systems. Now, if you look at the number on a trailing basis, it is not looking expensive. No, But buy about certain rate beach photos. sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, I couldn't hear you clearly, sir. If you don't mind repeating, sir. I think. Sir, I think I'm hearing you, sir, but maybe I have a network problem. Can you? You are audible. You are audible. सर सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर शरद सर. हाँ, आप चालू रखो. मैं सिगरेट पीता हूँ. Okay. Darshanji, what would be the repercussions on the two companies listed in India by GE? Anything uptrend uptick you see with this Prime Minister going to US and? No, sir. I think the businesses in India, sir, are the GTND that you're talking about, sir, is very different business. So what I'll tell you what I'm seeing in this. I'm not necessarily looking from a stock point of view. I'm seeing, sir, that the ecosystem in India, if it migrates from a Russian kind of a domicile into a US kind of a military hardware scenario, and if those companies set up businesses in India, like a GE is intending to manufacture the engine in India, I think the ecosystem will thrive. The money will be made in the ecosystem around it because these will be privately held businesses, sir. So we may not be able to get, as investors, direct access into these names, but the ecosystem around it could be very interesting, sir. So do you think, sir, Cyient, which is running right now like anything, has a direct connection with this thing? I think ENRD space much, and there's very interesting bits, sir. Today, I think Bain and Company has put out a write-up, and I think a little bit of this speculative frenzy in some of these ENRD plays, which you are seeing, be it Axis Kids or be it Scient or be it LTTS and all, is coming out of this article which says that in the new AI world, the ENRD business is the one which looks the most resilient, and the survey of the survey done by Bain seems to suggest that engineering work getting offshored or sent out to places like India is very high. One other interesting article is a completely random thing, I'll tell you. So there was an interview in Financial Times by the BDO, which is an accounting firm's global head. Now, he has another challenge, sir. His challenge is that in the US, not many people are pursuing accounting careers. So he's saying that I don't have auditors to do accounts. So BDO is looking at setting up capacities in India to audit the accounts of American corporates in India.
Now, all these models which are shaping up, in terms of different models, like accounting job getting done in India. Who would have imagined that in India you'll do the Indian CA will audit the books of an American company, will be certified by some CPA in the US. But all these things are evolving. So, somebody keeps asking about an MNC stock, MNC stock. One MNC stock which has only given me despair so far, but in which I'm the most hottest, is United Spirits, because I like the products, I use their products, and I think it's a company with the greatest prospect. And especially when you are looking at an services business scaling up to well beyond $200 billion. Like India's aspirational target on services physical good export is 2 trillion by 2030. It's a target, of course. So it's always to be taken with a pinch of salt. But still, the aspirational target, if you land up doing such stuff, the whole middle bracket of this country will fly. Like, for example, per capita income of India is $2,000 per GDP, but the point is the per capita income of Karnataka is $3,800 per GDP. So, for those who believe in such stats, then United Spirits is a great place to be in. But oh, itna vexed business hai because this government's taxation policies, but it's a super business to be in. And somebody just mentioned that a whole lot of others like a Radico and Soma made a lot of money. Unfortunately, as you become richer, you're going to be preferring to drink a Black Label and a Chivas Regal. Unfortunately, United Spirits caters to that bit. So that's my Agreed. limited point. Agreed, Krishnan. That's my limited Thank point. you. Yeah, Thank yeah. you. Thank you, sir. for You the have a insight. lovely evening, everybody. Play safe, and I wish you all the very best. And Darshanji, do keep regularly coming on our spaces. Yeah. We Unfortunately, appreciate I that. was caught up with a little bit of time travel. I'm back in, and I'd love to join this. And I'm so happy I came on the call today. Thank you. I wish success to everybody. Have a pleasant evening and have a lovely weekend. Yeah, just one point, Yep. Darshanji. Any idea on Revthi equipment? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. No. Yes. Thank you. Bye. Thank you, sir. Samar sir, if you allow me, I have one question for Darshan sir. Yeah, please. Yeah, sir, you were talking about Darshan sir. You were talking about our systems. So Yes, sir. any inputs on whether how it can do, like whether to invest in this I'll tell company? you. So I'll be very honest with you. I'll just share what I know. So somebody highlighted to me that this company has been acquired by Blackstone. So that we all know, right? The face off with Bhavuk Tripathi about Bhavuk Tripathi not tendering his shares and Blackstone agreeing to finally keep it listed, right? Now Yes. they've got a 23-year veteran from Infosys who was here running the ENRD stroke engineering business at Infosys. Now, I'm just saying that ENRD, a 23-year veteran from Infosys, if he comes to an 800 crore rupee company at about 3,700 crore market cap, I'm just saying that if he lands up doing some great work, there's enough and more for us to make money on the table. True, sir. That's True. my mota point. point. I'll be very honest with you, but if you're asking me about the projects, if you look through his his annual report and present annual report, this tech companies actually write a lot of stuff which is very exciting. But the proof of the pudding is that when a new man comes on, whether he can deliver. And so, if you look at Axis Cadis, the Arun, I think his name is Arun. If I think Arun Krishnan, I think if I'm not mistaken, he comes in with a background from Tata Technologies and I think Wipro embedded system business. So if you look at the early numbers as Axis Cadis after he came on, things are looking up. So if you want to look at it in that context, so that's the limited point. But I'm just saying that my intention is not to recommend our systems or such as a stock. What I'm trying to highlight to you that in India, a lot of activity outside the large cap is looking so interesting that if you focus outside the large caps, maybe there's a lot of money to be made. That's my limited point. Okay, sir. Thank you. Thank you so much for your input. All the very best. Yeah, do well. All the very best. Do well. Thank you, sir. Yeah, Shashankji. Hi, good evening. Basically, my view and the question you can say would be in a banking system, banking sector. Basically, the valuation is too high, in spite of the government is
has declared that the money is not more than 5 lakh rupees is repayable. But how can be the valuation is too high in spite of by itself government is saying that your money is not a safe in the bank. So what is the meaning of the 4-digit stock price of banking sector and high valuation? Darshan, you Part will answer this. Darshan, Sorry. हाँ जी sir. you try and answer this. So it's a very difficult question because, but it's a very difficult question, sir. And but all शशांक I will भाई, ये Bolo. सब सवाल इधर किधर पूछते हैं? हम तो Oh, अंगूठा छाप लोग हैं। but खाली sir, वो थोड़ा बहुत कंपनी का मालूम है, वो नहीं नहीं दर्शन भाई को 10 कंपनी, मेरे को 2 कंपनी, बस। ऐसा सवाल काय को okay. पूछता है? क्या करने का है तेरे को? क्या ये जान के क्या करेगा? we are kite flyers here. नहीं, Okay. शशांक, what will you do knowing this? So basically, it's part of, I mean, not small investment, big investment, but about the sectorable investment. If you नहीं, invest into आपको particular करने का sector, है कि नहीं करने का है, कि ऑलरेडी है आपके पास? नहीं मैंने अभी तक किया नहीं है, करने का तो सोच रहा हूँ. छोड़ो नहीं, फिर जाने दो ना यार। वैसे हाँ, obviously नहीं irrelevant नहीं, मैं question भी है. वो पिक्चर बनाने का सोचता हूँ, तो सोचता हूँ कैसे होएगा, क्या होएगा। ऐसा सवाल है, छोड़ो नहीं यार। जिधर अपने पास शेयर नहीं है, ना इंक्लिनेशन है कि आप जिंदगी में लेगा, नहीं, मैं नहीं लेगा बैंकिंग का शेयर, तो जाने दो ना। और 5 लाख देता है गवर्नमेंट, तो वो जो ज्यादा रखता है उसका तकलीफ है। नहीं वैल्यूएशन पे मैं बात कर रहा हूँ. 5 अरे लाख तो पर जस्ट एग्जाम्पल है. will it serve any purpose? Will my answer or anybody's answer will serve your purpose? हाँ ठीक है डिस्कशन के लिए, बट व्हाट? एंड ऑफ द डे व्हाट विल बी द एंड Yeah. रिजल्ट ऑफ इट? वो कोई कंपनी का पूछो ना शशांक भाई। Like so example, like there is a company of uh, Kotak. हाँ, So Kotak Bank example, there is a 4-digit. The price of this stock is the 4-digit. और मेरे पास नहीं है, और मैं माथे भी नहीं मारेगा। आई वोंट शॉर्ट इट। तो मैं क्यों सोचूं उसका? सी, अब बाजार में 4,000 कंपनियां हैं। यू कैनॉट थिंक ऑफ ऑल द कंपनीज। I think of maximum 20 companies. Darshan might be thinking about 100. ये गोल्डन आई क्या नाम है, समझ भाई, वो 50 कंपनी का। तो जो अपना फोकस है वो रखो ना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। दैट वे वी कैन डिस्कस एनीथिंग। True. दर्शन भाई, हाँ जी sir. there हाँ जी is sir. a company called Indostar Capital or something. Yes sir. Yes sir. It is also owned by this Goras only. Yes sir. Yes sir. And recently they had to dilute their stake. Yes sir. Yes sir. So they diluted at around 110 or something. I don't know what's Yes that. sir. Yes sir. So do you see any good? Because my attention went there because it was an MNC. Yes sir. Yes sir. So do you think it can? Sir, sir, on the credit lenders, na, sir, I will tell you only one thing. That, sir, this is my impression, but I stand corrected with my understanding, sir. See, one is that you have to, if you are a financial services company, sir, if you want to survive in this country, you have to have a liability franchisee. The liability franchisee in this country, to my mind, is also a great brand, right? Because the confidence that you walk into an ICICI bank or HDFC bank or an SBI or a Bank of Baroda, and that if you put your money in a savings account, current account, or a fixed deposit will not be lost, itself tells you the superior quality of that bank's ability to make profits, right? Because they will always be better than an RBL, stroke a South India bank, stroke some other bank,
including an NBFC, which is not necessarily very reputed, who has to raise money at slightly higher cost, which effectively means that you tend to take up a little crazier amount of risk because you want to also make sure that you make great ROAs. My personal take on this financial services model, sir, is that if you look at the underperformance of HDFC Bank over the past, 2-3 years, post the announcement of the merger in particular, I think efforts of people who want to pay financial services and to have in their portfolio, because clearly it's a 1.2, 1.5 growth delta to a GDP, a nominal GDP growth, then you are happier focusing your energy, to my mind, on HDFC Bank, sir, and including maybe an Axis and including an ICICI Bank or a Kotak, sir. And because I think that whole lot of these PSUs, including NBFCs, will have to keep conceding their market share to these players. So these players, to my mind, will grow ahead of the system. They have a liability franchisee, which effectively means their borrowing cost will be great. But so for people like me and you who don't have great amount of money and who are essentially using our own capital at work, all these 12 and 15% compounders, sir, may not necessarily be great spots in a market like ours, where opportunities are scaling up in many many small and mid-sized companies, especially with the manufacturing franchisee. So I would say that people who are looking to invest, keeping their risk reward profiles in mind, you know I would prefer to stay with the brands, sir, because eventually the confidence to be able to walk into that place and make a deposit itself is a differentiator between one bank versus another bank. No, my question was Yes, IndoStar. sir. What? Indostar, sir, I've been through that company. Unfortunately, sir, if you look at the history of that guy, the promoter of this company was a domestic PE fund, who was effectively also the owner of Burger King. And he went and palmed his companies off to retail investors at a terrible valuation. This company's got into a flux. Now you have a new fellow coming in, but sir, you please. I mean, so No, what no, I'm no, not, no, 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 no. Don't give me a lecture. Yes or no. Look or don't look. sir, I would not buy. But. I don't typically trade lenders, sir. Unfortunately, Oh, my okay, comment will be okay. cut I here. I got the answer. Now, one very important question. Yes, sir. You mentioned HDFC Bank merger and all that, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, HDFC is the holding company. Yes, sir. HDFC Bank is the subsidiary. Yes, sir. HDFC holds 20 or 25% shares in HDFC Bank. Yes, sir. Now, I'm saying on merger, Yes, sir. that holding will get extinguished. Yes, sir. It will become, I think, treasury stocks, sir, to the extent I thought they're lying in the balance sheet. But Okay. I don't know. I don't know, sir. But so what is the question, sir? If I may please. No, no. So I'm saying whether it remains as a treasury stock or gets netted out, extinguished. So I will look this up and respond to you next time. But I'll tell you only one thing, sir. I have, you know, No, no, no. So I was saying the combined value will take a dip. That's what I'm saying. so see the stocks, sir. If last 2 years, if hasn't performed, and if it is earnings have compounded, which they have, sir, it's anyways trading at a cycle low, and it is now trading at a discount to the likes of ICICI Bank. Hmm. It's a fabulous franchise, sir. If you meet managers who work No, in no, no, ICICI, no, 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 no. Please. I'm not talking about the quality. yeah. I'm just asking you about the accounting treatment and No, the sir. impact on the stock. It'll be. I think I'll be honest enough to tell you that I have to look this up and respond to you, sir. Yeah, so I'll call you up within half an hour. You look up and be ready. So right now, sir, I suggested to you are a gentleman, Mr. Satpal, asking you for an MNC stock idea. So I told him, buddy, I think the only greatest MNC stock in this country which is making me suffer a lot is United Spirits. But I think that keeps everybody's spirits up, and I think that's the sector to look at. We we are ignoring your last comment. It's not a good investment I know. because It's no, a no, very badly taxed business by the yeah, states. yeah.
No, and lot of cash and all that. वो सब Yeah. bogus धंधा है. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Anyway, Yes, sir. yes, Srinivasan. Hi sir, sorry, I was having connectivity issues, तो co-host में मैं ही मुझे ही निकाल दिया गया. ट्विटर से दुश्मनी है मुझे, या सॉरी ट्विटर को मुझे दुश्मनी. Sir, that gentleman asked a very good question. I have finally understood banking valuations. It's because मैं जितना भी पैसा रखूं, they only owe me 5 lakhs. So they should be valued very highly, and I should value my banking deposits with a risk weight ratio. So actually, if that gentleman is there, I want to tell him, bhai, you have understood one of the cores of the marketing aspect of currencies. No, but he understood the Ha, reverse so also. this is my usual sales pitch for आरबीआई बॉन्ड खरीदो सर. मतलब जो भी सुन रहा है, अगर एफडी में रखना है तो आरबीआई बॉन्ड में रख लो. वो सेम है ऑलमोस्ट, कुछ खास फर्क नहीं है रेट में. समटाइम्स यू गेट बेटर रेट्स एंड इट इज 100% इंश्योर्ड. आई मीन द कंट्री विल फॉल अपार्ट इफ आरबीआई डिफॉल्ट्स. So that was the short piece I wanted to give, sir. So, if you permit me, sir, I will just add to Darshan you bhai. that in case of a default on a credit, you become an equity owner, right? So, उससे अच्छा equity खरीदो. हाँ बिल्कुल, एक्चुअली हाँ. तो एंड फिर I mean, you take a credit call on a guy to make a 7-8%, whatever that number is, taxable return. But in case of an event of a bad credit, that we all can make mistakes of picking up a bad credit. It starts having the contours of an equity ownership. The easiest thing then is to buy equity. yeah, I get it. Yeah. जेटेरिस ले लो, अच्छा शेयर है. कंपनी बंद है. True, point taken, sir. But in this market, it is quoting at 60 rupees. Imagine. And I was telling a friend, if a Kingfisher would be relisted and included in Nifty, it would touch 800 rupees. आराम से 800 हो जाएगा. True, sir. True, sir. Yeah, who's this? Srinivas Rao K. Srinivas. Yeah, Srinivas ji, unmute कीजिए and please come as a speaker. क्या बताऊं भाई, देश बेचा जा रहा है, देख रहा हूं मैं. और क्या बात बोलूं मैं. Yeah, can you tell me the इंडिया इज सेलिंग, वी आर वाचिंग. और क्या बोलूं, क्या बोलने के लिए बचा है मेरे पास. हेलो. हाँ अभिषेक जी बोलिए. hello, आवाज आ रही है? आ रही है. Sir, what about Shakti Pump? What do you think that stock can? Shakti Pump. अच्छा है, वो सुना है. अपने ट्रैक नहीं करते हैं, पर सुना है अच्छा है वो. Okay. बोलो. Yeah, Chirag, you wanted to ask something to Darshan ji. Yeah. Darshan ji, I just wanted to ask you. You made a big deal about the GE engines potentially being made. It was a Reuters story, so I'm assuming there is some truth to it. So you made a big deal about some tech transfer potentially that would happen, but Indian arms deals have always been like that. They've always been predicated on tech transfer, going back to, let's say, the Bofors gun, and in between there are many other things. So whenever India buys a weapon system, tech transfer is usually part of it, and it was supposed to be for Rafale also, but apparently that's got scrapped for whatever reason. Haji. So I mean, why do you feel this is So I'll just give you a very honest answer. Is that I read the newspaper article
which I relied on because I'm not necessarily a defense expert. And that article seems to be suggesting that typically transfers of technology on engines is not usually done by countries, and it requires a special dispensation by the government, right? So the G tech transfers engine can only be done on the basis of an approval the US government does. So I see that as an opportunity for them to build an ecosystem with India. See, at the same time, all your defense stocks in India have done their bit. Data patterns ho ya HAL ho, they've all been 2, 3, 5 baggers. I only see tech transfers as an enabling ecosystem in which some domestic activity can help, and we can thrive. That's my limited point. So I think that if the US government's approval is required to do a tech transfer of an engine by GE, I thought it merits attention. That's my limited point. Yeah, I sure. wouldn't. So that's the only observation I have. I mean, I don't think me and you as minority shareholders can directly benefit by playing, which is Samad Bhai just asked about GE's listed business in India. I don't think it's going to come in any of the GE listed businesses for me and you to play. Nor is that the C-24 transport aircraft, which I think the Tatas are doing, and you will not be able to benefit because these are privately held businesses. And also another thing, Darshan, a bit off tangent. Yes, All sir. these companies, Hindustan Aeronautics, Mazgaon Yes, sir. Dock, Cochin Yes, sir. Shipyard, Yes, sir. one should never ever invest in such companies because, according to me, they are just government departments only in the Absolutely, job sir. of a company. Yes, sir. But Amma sir, what happens is that there is a trade, sir. Now, if I am in this market and if there's an opportunity, you play that. That's all, sir. I don't think that these. That, This was some mental, how would you say? if you remember, if you remember, sir, the HAL OFS, which happened not the round, this current round, the previous round happened at close to 800 or 900 rupees, if you remember, sir. Yeah. At that point of time, it created a very durable bottom with the whole order of Tejas in the pipeline to come through. So it offered a great risk reward. No, I fully agree. Sure. But it's not a portfolio position at all. I don't think any government business are portfolio positions. No, I just told that gentleman, जो चीज में अपना काम नहीं है, वो क्यों बात करने का? Like, for example, someone very interesting thing I'll tell you, sir. About Bharat Electronics, sir, if you remember, it never made you great money. It only made you great money the day the government's threshold holding fell down to closer to 51%. Because then the government was very clear that it cannot strategically dilute below 51%. Yes. So the supply on the counter stopped. Yeah. And that was the trade, sir. Baki to numbers were always there. It's just that the supply stopped. And then you started looking at a company with a nice 19-20% ROE or whatever that ROE that Bharat Electronics was making, and a nice dividend coupon. And that's really what the trade was, which is exactly what market did yesterday in Coal India, sir. So to that observation of the gentleman, my limited point is I'm seeing it as a little bit of a kind of an opportunity, because India is better placed in having access to the US, because eventually this is the world's largest country by GDP. And so if we are aligned with them, it makes sense for us both on the manufacturing and services side than to be aligned with the Russians. That's how I see it. True. Yes. Harshil Patel. Hi. Good evening, everyone. So, Sarath, I actually just wanted to reply to your question on that HDFC and HDFC Bank merger. The equity, the intercompany holding will get cancelled. So, actually, I have referred the scheme document reference into this space. So, maybe you would like to see. What? So HDFC Bank and HDFC Bank no merger થશે. So the scheme of arrangement. So intercompany holding will get cancelled. So this is as per India's 103, IFRS 103, business combination.
So what I am thinking is right, no? So it's a book entry, no? So ultimately there is no change, right? There is no change. No, but the Because capital shrinks, no? see, that, Arshil bhai, what Sharad sir says is 1 plus 1 is not equal to 2. It will be 1.8, 1.75, 1.5. नहीं, पर आदि HDFC बैंक HDFC बैंक का valuation will automatically factor in all that thing when we are doing a valuation of HDFC. Demerger में possible है, merger में नहीं है possible. Because Demerger में ultimately there is no developing change. होता है. But there is Demerger no में change. नहीं There is no change. आप सुनो आप वो merger होने के बाद we will have a talk on this, sir. No, Arshil bhai, you are a chartered accountant. Yes, I am a chartered accountant. And I am a chartered accountant. So tomorrow you give me a phone call. Sure. My number is on my this. I have your number, sir. I have your number. We'll discuss at length. Sure, sir. Sure. Thank you so much. Thank you. Yeah, Arvind bhai. Arvind Kachola. Arvind bhai, Arvind Kachola. Good evening, sir. Good evening, everyone. सर वो निफ्टी और इलियट वेव की बात नहीं करेंगे सर, उसके अलावा कुछ भी. एक्चुअली मैं उसी के लिए आया था, अनंत सर दिखे थे तो अभी अनंत सर चले गए लगता है वापस. तो दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ उसके अलावा शरद सर के लिए. एक्चुअली कैस्ट्रोल इंडिया के बारे में थोड़ा जानना था शरद सर से. एज ए एमएनसी हाउ इट इज. धीरा है, स्लो है. और यूनाइटेड स्पिरिट सर. वो तो इतना दर्शन भाई ने बोला ना, और कितना बोलेगा. ठीक है सर. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच. या शशि जी अनम्यूट कीजिए सर. तो फ्रेंड्स, ओके, वो कोई रिक्वेस्ट आया था. फ्रेंड्स, we'll call it a day. Okay, one more. बोलिए जेम. बोलो साहब. Hello. Yeah. Hi, Sharji. I want to know regarding your views on. Sharad sir, your calling of the day. You wait. Yeah. Hi. Yeah. Hi, Sharji. It's Jazz here. मैं आपकी हमेशा I listen all your spaces very carefully. So I've got one question which I've been doing a lot of research on it. Your views on chemical sector, sir. They have not participated in this rally since last 18 months. Like Tata Chemicals, you can see there is around 52-week low. Atul Industries, Aarti Industries, they're all almost hanging around the 52-week low. So आपका ये जो मल्टी these are blue chip companies, chemical industries के ऊपर क्या view है going forward? It's a process industry. Useless. Superly expensive. Okay. But as per their quarterly results and everything is they are smashing the numbers like Vinati Organics, Tata Chemicals. I know they have a problem with the caustic pricing. थोड़ा सा पीछे भी effect हुआ है. But देखिए भाई साहब, आप एक बात समझो, जो बाजार में प्राइस है ना, हाँ जी, उसको कभी आर्ग्यू नहीं करने का. प्राइस है ना, आप ले सकते हो, आप बेच सकते हो. और आप ही बताया कि 18 महीने से चल नहीं रहा है.
मैं बोलता हूँ 18 साल नहीं चलेगा। वो जो बूम आ गया ना बीच में, ये सब 20-20 रुपए के भाव वाला है। ये थिरुमलाई केमिकल है ना भाई? हेलो, हाँ जी। ये थिरुमलाई केमिकल आज 180 का भाव है। 1986 में भी 180 का भाव हुआ था। तो ये सब फालतू साइक्लिकल है। डू यू थिंक इट इज આપણે हाईटेक बिजनेस? हाँ जी। मिक्सिंग का काम है, और वर्ल्ड ओवर केमिकल बिजनेसेस में पैसा बनता नहीं है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। और मैं मतलब ठीक है, आप पूछ लिया, मैं बोल दिया जो भी समझता था, लेकिन हाँ जी। why do you concentrate on things which are not moving, which are down? You should be asking of things which are going up or moving up, तो पैसा बनेगा ना। नहीं, of course, I just wanted to check your expert like you, your views on this. अरे आई एम नो एक्सपर्ट यार, कुछ नहीं है बॉस, ये साइक्लिकल है सब कुछ। 2 साल के बाद देखेगा वापस सब 200-300 हो जाएगा। ये 4-4 हजार 2-2 हजार फालतू का भाव है सब। और Okay, इक्विटी का thank you जी। नहीं होता है। ओके, या कपिल पंड्या जी बोलिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार। एक मिनट शर्मा जी, आप एक मिनट म्यूट रखिए सर। हाँ पंड्या जी बोलिए। Samarth bhai, see, this is my first session in this prestigious community. So I just wanted to ask, I have identified two stocks in my mind, which is known as BAC and CDSL. So I just wanted to understand, is it good for long term, because this stock is beaten down very badly from the highs. So can we accumulate in SIPs or something like that? Darshan, you want to take that? No sir, this is a very challenging idea, sir. No, okay, I'll spare you that. भाई साहब। हाँ जी सर बोलो। शेयर बाजार में हाँ जी पैसा कमाने का एक ही तरीका है, जो ऊपर जाता है उसको लो, जो नीचे जाता है उसको बेचो। अच्छा, आप उल्टा सोच रहे हो, आप सही भी हो जाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत पड़ जाओगे, पर मजा नहीं है, ये सब फालतू का स्टॉक है। अच्छा, आप ब्लू ब्लडेड स्टॉक में जाओ ना सर, अगर आपके पास पैसा है। आप क्या काम करते हो? સર એકચ્યુઅલી હું બેંકમાં મેનેજર હતો. આઈ વોઝ વિથ HDFC બેંક અર્લિયર, અને આઈ વોઝ અ ફંડ મેનેજર ઓલ્સો ફોર વન ઓફ ધ લીડિંગ એશિયન પેન્ટના જે પ્રમોટર છે એમનું ફંડ મેનેજ કરતો હતો પહેલા. So you should know everything. ના, because એટલે just see, because I always identified the stocks which are beaten down very badly. I identified Olectra Green 3 to 4 years back when it was 70 rupees. At that time, people were saying कि ये फालतू कंपनी है, इसमें मत डालो, ये करो, मतलब you don't do it. And I identified that stock only on like by using my common sense. Once I was going to Fountain Church Gate, so I saw that bus Olectra ni bus chalti thi and I have an habit of relating anything with stock market. So I just found out that that Olectra ની બસ છે આ, તો ગવર્મેન્ટને આપેલી છે. ગવર્મેન્ટ has started the contract. If you will talk in English or Hindi, it would be better. Not a problem. So I just identified that stock by I was going to Fountain Mumbai Churchgate May, and then I just saw, I have an habit of relating markets with anything. Like whenever I see anything new, I just go on Money Control and search the stock. So at that time I found Olectra. I just used my common sense, stating that if this company is currently it is a new company and government has given a chance, so there won't be any payment won't go anywhere. Maybe the government may delay payments by for some time. So that is what I observed, and that is what I had done.
and I'm invested heavily in Electra from 70 rupees. So I don't think that we are much more enlightened than you. If you have done your research about BSc and CDSL, So it is not any research. I just I just use common sense that when Nifty is 18,000 today 18,500 and the stock is trading below, like it is trading at 52-week low, and we can see the business, ongoing business. So that is what I just wanted to I just wanted to ask that is it a good idea to enter at these levels, or we should wait down for some more correction? see, I won't comment on your idea, Okay. but I will say one thing. Stop all this nonsense. Okay. And start investing in winners. Okay, Venus. Okay. The pace is very fast of your earning. Okay. And you will feel jubilant in your life. Okay, okay, no problem. It will bring a lot of positivity in your life. Okay, okay. Definitely, रोज definitely. बढ़ेगा तो अच्छा लगता है ना. हाँ, वो तो अच्छा लगेगा ही रोज तो. तो ये तो गिरते 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 1 साल लगे 2 साल क्या मालूम अपने को. So why do you say you retired from HDFC Bank? So No, I no, I'm think not retired, sir. I'm doing my own this now my own business. What business? Sorry. What business? I'm doing trading only, full time trading now. And how old are you? I'm 42. Oh, इतना young है आप. हाँ. और सिखाना हमको यार. अरे सर आप ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? आप No, but phone I just करो. sorry. Tomorrow you call me up. Definitely, sir. What time would be feasible for you? अरे कुछ भी करो ना. No problem, sir. No problem. Definitely, I would do that. और मेरा नंबर लिखा हुआ है ट्विटर है. हाँ हाँ मैं yes sir. I will try. I will take it, sir. Okay, thank you. Thank you so much. हाँ कपिल पंड्या from Mumbai. नमस्कार नमस्कार. सर जी, हिताची एनर्जी के बारे में आपका क्या व्यू है? हाँ, हिताची एनर्जी एमएनसी है हिताची इलेक्ट्रिशियन. मालूम है. वो 3,000 का भाव है वही ना. हाँ वही. उस वो भी अच्छा है. और आधा बीच की एबीबी ले लो. कौन सा सर? एबीबी ले लो आधा. अच्छा, एबीबी और हिताची. ठीक है सर. राजेश नरूला जी. Sir, super namaskar. नमस्कार सर. Sir, I chanced upon this discussion today, and I think I'm very lucky to hear such enlightened people. तो एक छोटा सा मेरा आपसे वो था, एडवाइस मांगना चाहता था मैं कि सर बिकॉज मैं कभी बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल स्टॉक्स का मुझे इतना नॉलेज नहीं है. तो ऑफ लेट अराउंड 6 months बैक आई स्टार्टेड इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स बाय वे ऑफ SIP ऑन डेली बेसिस. एक इंडेक्स फंड में डाला, एक फ्लेक्सी कैप में डाला और एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में डाला है. तो सर इज दिस अप्रोच राइट? गुड परफेक्ट. तो शरद सर आपने कह दिया तो मतलब पप्पू पास हो गया. एंड सर आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने आप सबको सुनने का आज मुझे मौका मिला. एंड आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर लिसनर बिकॉज आप लोग तो योर लैंड माइन ऑफ इंटेलिजेंशिया आई वुड से. मैंने इतना अच्छा डिस्कशन मेरे ख्याल में कभी नहीं सुना सर. थैंक यू सो मच. Thank you all of you. Really good. Thank you, Rajesh. Yeah. Thank you, sir. Sahil Bablani. Sahil Hi, ji. everyone. Can you hear me? Yeah. Hi. This is my first session, so I just want to have a view on your paper industry with all the plastic ban and environment system. Sahil ji, your voice is not clear. Can you request if you are using hands free like anything?
can remove it, sir. Can you hear me now? Yeah, so I Yes. just Yes. want to have a view on the paper industry because I seen a boom when the plastic ban and environment sustainability. So I just want to have a view on paper industry if it's better for a long term investment or not. Yes, so much. Sahilji, just around 100 kilometers from my city where I reside, there are around 150 plus paper mills, recycling and fresh paper mills. So out of that, around 40% are on sale right Okay. now. Okay. So जो narrative है अभी that नहीं छोड़ो. हाँ जी सर. Sahil, what makes you interested in paper industry? So actually the P is very low and their ROC and ROE was very good. So then I was interested in researching on the sector. Okay. I got what you said. Beta, if you want, how old are you? I'm 25. Okay. ये उम्र लो पी शेयर लेने का नहीं है तेरा. ये तेरा उम्र है हाई पी शेयर लेने का. और एक बात समझना, जो सेक्टर का पी लो हाँ जी. होता है ना, उसकी तरफ नजर भी मत डालना, बिकॉज ये डाटा आप अकेला नहीं देखता है, पूरी दुनिया देखती है. ओके. तो वो लोग नहीं आते हैं, तो आपको वो क्यों जाना है? राइट. और देख, अगर पैसा बनाना है ना, सोच मत ज्यादा, जो बढ़ता है पकड़ ले. ठीक है सर. अब कमा ले पैसा. ठीक है सर. थैंक यू. या विनोद जी. समझ भाई कैसे हो? मजे में? मजे में सर. अच्छा, एक चीज ये था, मैंने कोरोना के पहले 2018 में ये इंगसोल रेंट लिए थे, तो उसका प्राइस तो बहुत, मैंने कुछ 750-800 के आसपास की प्राइस है, तो वो तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है. इस तरह फिर मैंने 2 शेयर्स और ढूंढे कोरोना के बाद. जो मैंने एक लिया था, रतन इंडिया लिया है, वो मेरे को 9 रुपए में मैंने लिया था, जो आज 38 रुपीज है. और दूसरा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो नहीं सर, हाँ जी. आपको क्या पूछना है? हमको आपका नहीं सुनना है कि आपने कितने में लिया. आप बताइए ना, सवाल बताइए. सर मैं वो क्वेश्चन कर ही रहा हूँ कि ये अभी मैंने जो 2 शेयर्स लिए हैं, ये जो मैं कोरोना के बाद, रतन इंडिया और ये उज्जीवन में, तो ये आपके हिसाब से ये कैसे लग रही है? उसको सेल करके इंगरसोल ले लो वापस. और अच्छा, ठीक है. इंगरसोल का मंथली पी भी 70 के ऊपर है. अच्छा. मंथली RSI, सॉरी. अच्छा. नहीं, और भाई एक बात बोलता हूँ. हाँ जी. आप जब इंगरसोल बोला ना, हाँ जी, तो हम सोचा आप एकदम फर्स्ट क्लास आदमी है, क्वालिटी आदमी है. हाँ जी. फिर ये जो नाम लिया ना, रतन और जीवन में वाला, ये तो कबाड़ा है. अच्छा आदमी अच्छा शेयर ही लेता है मेरे हिसाब से. विनोद जी. हाँ जी. विनोद जी, इंगरसोल यहाँ से भी डबल हो जाएगा. अरे डबल क्या, तुम छोड़ो ना, नहीं होता है डबल. चलो, पर घर में रखने जैसा शेयर है. शरद भाई, आपकी बात सही है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा क्या होता है, तकरीबन 10-20% है ना, मैं थोड़ी इसे चिल्लर में डालता हूँ. और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि अभी मैं नए से पैसे डाल रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में 3 स्क्रिप आ रही है, तो उसमें से कौन सी लेनी चाहिए? मैं 3 स्क्रिप का नाम ले रहा हूँ आपको. एक सनोफी है, और ओरेकल है, और जिलेट है. तो इन तीनों में से आपको क्या, कौन सी सही लग रही है? तीनों बकवास है. तीनों बकवास है. बकवास इन द सेंस इट्स नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग. ठीक है सर, थैंक यू. आपको रिटर्न देगी, बट इट वुड बी नियर टू द फिक्स्ड डिपॉजिट. विनोद जी. अच्छा. नहीं, उतना भी नहीं देगी वो. हाँ, OFSS ने परफॉर्म ही नहीं किया लास्ट. अब देखोगे तो सही बात है. और उनके कस्टमर एक दो ही है. मेन कस्टमर इज HDFC बैंक OFSS का. अच्छा. ओके.
मेन कस्टमर इज HDFC बैंक इन इंडिया, OFSS का। अच्छा अच्छा सर, एक दूसरा कंपनी भी है ईसब इंडिया, उसको अगर आपका कुछ नॉलेज है उसके बारे में। ईसब इंडिया भी आप ले बहुत लो, अच्छा। आंख बंद करके ले लो। ले लो, ले लो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। एलांटास बैंक भी ले लो। कौन सा सर? एलांटास बैंक। एलेंटास, ओके, ठीक है सर, मैं देखता हूँ उसको भी। या थैंक यू। थैंक यू सर। नीलेश जी बोलिए। शरद सर नमस्कार। सर ये अनूप इंजीनियरिंग आपने जो अभी बात किया था उस पे आइडिया क्या होता है, मतलब कैसे आप ये जो भी है। मैंने भी अनूप इंजीनियरिंग देखा था, मैंने 1100 पे लिया था अनूप इंजीनियरिंग, आज ही सेल किया मैंने। बट मेरा आइडिया शायद अलग था, मैं चार्ट्स देखता हूँ और मैं हिस्टोरिकल ईपीएस देखता हूँ वो सब। आपका आइडिया क्या होगा उसमें, मैं वो जानना चाहता था। मेरे को दर्शन भाई बोला था। अरे मैं थोड़ी वो पैदा करता हूँ आइडिया, आइडिया सब लेके आते हैं, मैं बातचीत करता हूँ, समझता हूँ। हाँ समझ गया, वही सर इसके लिए मैंने आज बोलता भी हूँ अच्छे दोस्त लोग रखो। मैं खुद भी ऐसा ही तुमने सर क्या स्मॉल कैप और किया मिड हमको कैप। इंटरेस्ट नहीं। मैं सर यही पूछना देख था भाई मेरे को मैं कि क्या बोलूँ, अनूप इंजीनियरिंग क्या आइडिया था। मैंने पूछने का, हाँ मैं बोलता हूँ ना तेरे को, हम्म, शेयर बाजार में अच्छा संबंध रखेगा ना और अच्छा आदमी लोग से संबंध रखेगा, झुक के पैसा आ ही जाएगा, कौन सा भी दरवाजे से आएगा। तो भाई तू अच्छा संबंध रख सबसे, अच्छे जो नॉलेज वाले हैं। मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन एक दुकान है उधर सबको मैं जमा करता हूँ, उनका आइडिया लेता हूँ और अपना काम चलता है। दर्शन भाई है एक्सपर्ट है एकदम, मेरे लिए गुरु है, गुरु मेरा। ओके सर। MNS sir. Hi. Good evening, everyone. Good evening. So I wanted to ask, like gold has corrected quite a bit. So अभी is it like in a downturn, medium term? तो मतलब किस प्राइस तक जा सकता है, if any idea about this? क्या मालूम, ऊपर जाएगा, 4-5 हजार डॉलर हो जाएगा 5 साल। शशि भाई वो 300 रुपए नीचे जाएगा, 700 रुपए ऊपर जाएगा। जितना नीचे जाएगा उससे डबल ऊपर जाएगा। इट्स अ परपेचुअल बाय फॉर द नेक्स्ट 2 years. Okay, got it. Thank you. अमित भाई बोलिए। सर प्रणाम, कैसे हो आप? बस मजे में भाई। सर आपकी हेल्थ कैसी है पहले ये बताओ। बस एकदम फर्स्ट क्लास। आप कुछ कोई पेप्सी क्या कोका कोला पी रहे थे कुछ? अरे कुछ वो अरे सर मैं सुन रहा था ना आपको, आपसे सीखते हैं ना इतना। देखो व्यू अपने अलग रहेंगे, दैट डजंट मैटर्स टू मी। मुझे आपकी हेल्थ का ज्यादा परवाह होता है सर, बाकी इस चीज की परवाह नहीं होती। क्योंकि आपको हम आपसे, मैं समर्थ आपसे इतना सीखते हैं ना। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, परपेचुअल कैसे पकड़ के जाने का? कोई भी चीज आप जब पकड़ के जाते हो ना, बाय साइड या सेल साइड, वो परपेचुअल कैसे पकड़ने का कि ये? जी सर। ये अभी मैं सोचता हूँ DLF लूंगा सोमवार को। आपने जैसे मुझे बोला, हाँ मैंने वो सुना कि DLF 500 के ऊपर जाएगा, मैं लूंगा। हो सकता है 1200 के ऊपर चला जाए। हाँ, सर आई गो विथ योर। जी सर। नहीं तो मैं 500 में लूंगा। जी सर। 470 का पुट ले लूंगा। हेलो। हाँ सर, तो आपने हेज कर दिया उसको। 470 का पुट ले लूंगा, फिर वो डिलीट मार दूंगा मेरी टच लाइन से, तो भूल जाऊंगा, और चलता रहेगा सौदा। ओके। तो मतलब सर अगर आपने को कोई फ्यूचर में स्टॉक लिस्टेड है
फ्यूचर में अगर स्टॉक लिस्टेड है, क्योंकि मैं भी ऐसा काम करता हूँ सर, मैं भी कोई स्टॉक में मेरे लिए इंटेलेक्चुअल डिजाइन तो सारा निकल जाएगा अभी, वरना मेरे लिए इप्का लैब, अपना ये कौन सा है दूसरा, लॉरस लैब, ये सब बंधन बैंक, ये मेरे भी आपकी जैसे लिस्ट में है, इनको ठोकना ही है। नहीं मैं बट कहीं नहीं, एक क्या है, ये ठोकने का बात बराबर है, बट दिस इज नॉट द टाइम टू शॉर्ट. यस सर, अग्रीड विद यू। डोंट फाइट द टेप. वो छोड़ दे. अभी मैं बोलता हूँ कि अभी मेरे जैसा मंदी वाला बोलता है डीएलएफ लेगा, तो मेरे को तो पैसे से मतलब है ना, मेरे को वो थोड़े मेरा व्यू जताना है, तेल लगाने गया, मेरे को पैसा मांगता है भाई. So I was saying I'll buy futures and I'll buy a put, और डिलीट मार देगा, देखेगा एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ वो क्या होता है, रोल ओवर करेगा. सर तो उसमें एक चीज, एक स्ट्रेटेजी आप, अगर आप बोलो परमिट करो तो मैं ऐड करूं इसमें तो, सर अगर आप 500 पे फ्यूचर ले रहे हो, फॉर एग्जांपल 500 पे फ्यूचर लिया, 470 का पुट ठोका, 470 को फॉर एग्जांपल 10 रुपए में बिका आपका, या 20 रुपए में बिका, जो भी प्राइस पे बिका, तो नहीं सर लिया उसका लिया लिया मैं. हाँ पुट लिया ना अपन ने, सर अग्री विद द फैक्ट, तो 20 रुपए का मैं या 15 रुपए का कोई ऊपर का कॉल ना बेच सकता इसको फाइनेंस करने के लिए? अरे नहीं भाई नहीं, अपन मेरे को लगता है कि 10 दिन में 600 ही होने वाला है. वो चुतिया गिरी है वो सब, बॉस कितने का. देखो सट्टा मतलब क्या, खर्चा. सट्टा मतलब पता ही होता है सर, नहीं, सट्टा मतलब खर्चा होता है, खर्चा. खर्चा होता है सर. तो आप जब तक खर्चा नहीं करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा. तो सर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अपन ने एक, मैंने मेरी लाइफ के लिए एक इंश्योरेंस प्रीमियम लिया, इंश्योरेंस प्रीमियम को मैंने भरने के लिए कि अगर मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम गलत प्रूव हुआ तो मैंने उसके अगेंस्ट में कुछ हेज कर दिया, तो हम हेज ही करके गए ना सर, कि अगर मेरा व्यू ना चला तो मैं हेज करके चला गया उसको, कि अगर गलती से नीचे गया तो मैंने जो 470 का पुट खरीदा है वो मुझे हेज की तरह काम करेगा, राइट और रॉन्ग सर? हाँ वो नहीं, वो तो 30% रीजन है, 70% है कि मार्जिन है ना, जी सर. वो मेरा आधा के नीचे हो जाता है ये स्ट्रेटेजी से. सर पर फ्यूचर खरीदते हैं और पुट बेचते हैं ना, तो अरे मार्जिन, पुट लेते हैं यार, क्या बेचते अच्छा हैं. सॉरी, तो सर मार्जिन 30% भी नहीं आएगा उसमें, मार्जिन उतना नहीं रहने वाला, क्योंकि अपन ने कुछ प्रीमियम भरा है और सामने पुट फ्यूचर क्या खरीदा है बोल ना. रहा है, तेरे को समझता ही नहीं यार. सर मैं तूने तो एक रोज जैसे, फ्यूचर लिया, जी सर, एक फ्यूचर लिया, जी तो 1,75,000 मार्जिन है. जी अगर तूने 470 का पुट लिया 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 जी सर, तो तेरा मार्जिन 75,000 रुपया रहेगा. ओके, आई विल गो एंड टेस्ट इट टुमारो सर. No, what the fuck you say? Don't say like this. Don't ever say this. सर माय मिस्टेक, आई विल से सॉरी फॉर यू फॉर दैट. नहीं, when I am saying so confidently, आप बोलते हो मैं टेस्ट करूंगा. नहीं सर, मैं अरे टेस्ट भी बोलना नहीं मैं, करूंगा, मैं टेस्ट भी नहीं करूंगा. नहीं आप देखिएगा, समझिए ना. ये अगर एक दिन आप आ जाओ मेरे पास में, आपको इतना स्ट्रेटेजी समझाता हूँ कि बहुत कम पैसे में इतना सौदा हो सकता है कि आप पूछो मत. आप आओ तो सही एक दिन मेरे घर पे. आप बुलाते नहीं ना सर. अरे छोड़ना यार, तेरे को जब भी आने का आ जाए यार. जिस दिन बुलाओगे मैं तो आपके बाजू में रहता हूँ. अरे तू किधर भी रहता है, तू आ जाना एनी टाइम. मैं बुलाऊंगा नहीं, तू आ जा, तेरी मर्जी से. मैं आपको अपना फोन घर कर समझ के आ जाना. पक्का सर. या ये देखो, ये है ना एक आशीर्वाद होता है गुरु का, ये गुरु है हमारे. अच्छा सर, मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या लगता है आपको? वो तेजी होएगा. सर आप मंदी मंदी की बात करते हो, तेजी बोल रहे हो, मतलब मैं क्या पकड़ू? समर्थ भाई क्या पकड़ के चलने का सर का व्यू? नहीं वो तो अपने तरीके से मूड के हिसाब से बोलते हैं. अच्छा. मेन सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम 9:15.
प्री ओपनिंग में ही होता है, 9 बजे ही होता है। वो तो सही बात है। 9 मतलब बजे ये चालू करके 9:20 को ऑफिस बंद हो जाता है उनका तो। वो तो बेस्ट चीज है। इतने एक्सपीरियंस होल्डर है, तो इनसे तो जितना सीखो उतना कम होता है। सर आप कोई शेयर ढूंढते हो कि इसको ठोकना है या खरीदना है, उसके पीछे आपका क्या माइंडसेट रहता है? नहीं, ऐसे टिकर देखता हूँ तो नजर में आ जाता है कि ये जा रहा है या ये बढ़ रहा है। सिंपल है यार। एक्चुअली ये इतना सिंपल चीज है ना, मेरे को समझ में नहीं आता है लोग कितना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। पर आप वही तो समझना है कि इतना सिंपल कैसे कर दे। हमें ये चीज सीखनी है ना आपसे। अरे वो देख रहा था डीएलएफ में 460 से देख रहा था, फिर मैं बोला अभी 500 पे तो पकड़ना ही पड़ेगा। तो बस आप पकड़ लेगा, वो खुलेगा ही 500 लगता है। सर आप ये सारे ये घटिया वाले जो स्टॉक थे, एनटीपीसी, ओएनजीसी या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जितनी थी, सरकारी कंपनियां 15-15 साल परफॉर्म नहीं करी। आपने और मैंने आंखों से देखा है। डीएलएफ सर लिस्टिंग जब हुआ था ना, मैंने भी ट्रेड मारा था। आपने जो 1100-1200 का ट्रेड मारा, मैंने भी वो ट्रेड मारा था सर। सुजलॉन भी उस टाइम 1200 गया था। वो तो स्प्लिट बोनस होने के बाद उसका भाव कुछ स्क्रीन पे अपने को दिखा था कुछ 500 का ही। वो ट्रेड मैंने भी मारे थे सर। बट आपको वापस लगता है सर डीएलएफ वापस 1200 चला जाएगा? मतलब अगर 1200 गया तो रियलिटी सेक्टर ऑलमोस्ट रियलिटी सेक्टर 475 का इंडेक्स चल रहा है। कुछ 525 550 का ही है उसका। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि सबसे ज्यादा लोग पैसा का डालेंगे इंडिया में? या तो सोना चांदी में डालते हैं या रियलिटी में डालते नहीं हैं? नहीं यार, इतना सब मत सोचना। ये डीएलएफ का पूरा रेंटल डिस्काउंटिंग का है। और अभी जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स उसने लॉन्च किया, तो इतना बुकिंग आ गया, 1-1 करोड़ रुपया, माय गॉड। सर और 8 करोड़ के फ्लैट बिके हैं, 1000 फ्लैट बिके, उसमें 7000 लोग थे खरीदने के लिए। हाँ तो जितना जी सर। और बॉस मैं क्या बोलता हूँ, अपने को लगता है कि ये गुब्बारा बनेगा तो चलो ज्वाइन हो जाओ, सर पे आओ, फेटा बेटा बांध के शेरवानी पहन के तैयार हो जाओ। चलो, ऐसा ही है ट्रेडिंग यार, क्या है। तो सर जब तक ये गुब्बारा चल रहा है उसमें बैठे रहे कि हट जाए? नहीं नहीं, ચડતે વધે વધે લેવાનું, બડે બડે લો, ઘટે ઘટે बेचो। सर फार्मा सेक्टर पे आपको व्यू आ रहा है अभी? फार्मा सेक्टर सबसे खराब सेक्टर है आपके टाइम में। बट कुछ मुझे मेरे चार्ट बोलते हैं, समर्थक का भी चार्ट बोलता रहेगा, उसमें कोई ब्रेकआउट आ रहा है। सर फार्मा सेक्टर पे कोई व्यू आता है आपका? वो बस छोड़ना फालतू में, किसका भला हुआ है फार्मा लेके यार, बताना। भला तो किसी का ना हो सर। चलो विल, ओ माय गॉड, और कोई रिक्वेस्ट है एक लास्ट, फिर नहीं लेते हैं। शशि जी ने बोलना बाकी है। आप बोलो ना। मनन जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हाँ सर, मेरे को ये जो भी शरद सर ने जो स्ट्रेटेजी बोला वह मैंने सेम स्ट्रेटेजी अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सर अप्लाई किया हुआ है। 70 पे मैंने फ्यूचर प्लस किया हुआ है और 67 का पुट बाय किया हुआ है। तो सर ये कैसा है, मतलब क्या ट्रेड मैंने पोजिशनल लिया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना है कि कैसा है। अब 80 का टारगेट है, जा सकता है क्या सर ये? अरे तू मेरे को ये स्ट्रेटेजी का पूछ रहा है कि टारगेट का पूछ रहा है? टारगेट का सर। टारगेट हाँ, आराम से हो जाएगा। नहीं, स्ट्रेटेजी का नाम लेके उन्होंने आईडीएफसी का पूछ लिया। नहीं नहीं सर, वो
सेम स्ट्रेटेजी यूज किया, मेरा भी थोड़ा कम है फंड, तो उससे मार्जिन कम हो जाता है, पुट बाय कर लेते फ्यूचर का। अरे मेरे पास भी बहुत कम है, इसके लिए मैं भी नहीं यही नहीं कर सर, रहा हूँ। आपको तो सर बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ सर, आप तो कितने नॉलेज आपको सर, मैं तो 19-20 साल का हूँ खाली। गुड। ओ भाई, कुछ पढ़ो, आगे बढ़ो ना, इसमें यहाँ पर क्या आ गया फुटबॉल में? समर्थ 19 भाई, साल समर्थ भाई, तो हाँ पुलिस वाले लड़के को पूछो, भाई तू पढ़ाई क्या कर रहा है अपनी? नहीं, वही है ना। नहीं आपने ये कर लिया कॉलेज, क्या पास आउट कर लिया क्या नहीं कॉलेज? नहीं 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 सर, नहीं अभी मैं नहीं 3rd ईयर में हूँ कॉलेज, नहीं मुंबई नहीं में नहीं नहीं कॉलेज। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। 3rd ईयर में है ना? जी जान लगा के आज आज सट्टा कर। अब पढ़ाई को गोली मार, बाद में स्लीपर पहन के किसी के वहाँ देखना टर्मिनल पे, वो तू सौदा नहीं कर पाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। दिस इज नॉट फॉर यू, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम किधर आ गए? चलो, ओके, who's next? ING रॉयल चैलेंजर, अनम्यूट कीजिए सर माइक। हेलो। या बुटेल। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर, एक्चुअली आई एम 48 ईयर ओल्ड। वेल, मैं एक पेशेंट हूँ, हार्ट अटैक आ गया था। फ्रॉम पास्ट 2 years actually I'm at home. I just wanted to know, I'm getting some funds of around 50 lakhs for after real estate का कुछ ये हो रहा है, कुछ dilution हो रहा है फैमिली का। So what do you think I should do with that money? Like कितना apart मिल from रहा है FD, आपको? I'm getting some 50 lakhs maybe. And otherwise what do you do? Currently nothing, sir. Currently nothing from past 2 years. क्यों? Why? Pardon? Why you are not doing? No, because after I'd had a severe heart attack, the doctor said you can't work anything. You have to be at home for at least 5 years. It was very severe. And you have a residential house? Well, it is a joint this thing with my brothers. I don't know, after something, maybe after 10 years or something, we will be apart. Okay, so what your question is? Well, I just wanted to have some funds fixed, like because I have a daughter. After 5 years or 7 years, she might get married. Till that time, apart from FD or something, I just want to keep the funds growing. Basically, I was a banker, ex-banker, but I had to leave 6 years back since ING was taken over by Kotak. I was out of job after that. Are you in Later, I did some business. Are you in Sir, what's your good name? Sir, what's your good name? My name is Samir, sir. Hello. Okay. Okay. Yeah. And where are you based? I'm from Bangalore. Bangalore. See, example, I can't suggest anything. Okay. Tomorrow or day after, you give me a buzz. I will explain you what to do with your money. Fine, sir. My number is there on my Twitter. Okay. I hope it will be something like fixed but not fixed amount. अरे बाबा, टॉक टू मी ना, थोड़ी पैसा देने वाला है तू मेरे को बात करने का। Okay, sir. Okay. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Samir Menon. यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, केम छो सर? हमें सर मुझे ये जानना है सर कि रिलायंस RIL के बारे में मुझे थोड़ा पर्सपेक्टिव जानना है कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर मैं लेता हूँ आफ्टर 5 years के लिए, तो किस तरह रहेगा सर? ये अभी कुछ 2550 है,
5 साल के बाद 2700-2800 में तो बिक जाएगा तुम्हें। अच्छा सर, ठीक है नहीं, सर, आप क्योंकि एक बात समझिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है सबके लिए। जी सर। जब भी आप कोई शेयर लेते हो जी, तो कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर में, उसका शेयर लो। जी, जो कंपनी कंग्लोमोरेट है, जी, मतलब सब बिजनेस है एक के अंदर, जी, वो कभी नहीं लेना। ओके सर, वो ठीक है, नोटेड पॉलिएस्टर सर। भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, वो भी बनाएगा, दाल भी बनाएगा, चिकन भी बनाएगा, सब बनाएगा, मत लो वो शेयर। जी सर, ठीक है सर। इसमें प्रॉफिट होगा तो उसमें लॉस होगा, मतलब मजा नहीं आएगा आपको। अच्छा सर, समझ गया सर, ठीक है सर। बट आप रिलायंस का क्यों पूछ रहे हैं? सर मैं एक्चुअली रिलायंस का मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ होल्डिंग कुछ करना चाहिए, कुछ मेरी सेविंग थी सर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं अभी। तो मैं एक बात पूछूं। जी सर। आपने कैसे डिसाइड किया कि रिलायंस लेना चाहिए? हेलो, अनम्यूट कीजिए सर। जो मुझे वो लेने का ऐसा लग रहा था कि आपने जो रीजन बताया ना सर, कि जो नहीं लेना चाहिए इतने सारे बिजनेसेस जो हो, वो रीजन से मुझे लेने का लग रहा था, इसलिए सर। अच्छा अच्छा, जी सर। नहीं और एक एडवाइस देता हूँ। जी सर। समझो आपको 10-20 लाख रुपया लगाना है, और वॉट एवर बिजनेस, जी। गो टू एन एक्सपर्ट। खुद मत करो। जी। आपको लगता है आसान है, ये दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब ऑन अर्थ जी सर। ऑफ सिलेक्टिंग इक्विटी। गो टू एन एक्सपर्ट। वो टीवी देख के आप इन्वेस्ट मत करो, टीवी सुन के मत करो। जी सर। वो सर इसमें जो जी, जी सर। आप नहीं बोलिए ना। सर इसमें थोड़ा मुझे किस तरह चॉइस करते हैं वो सब कुछ, मैं एक्चुअली बिलोंग क्लॉथिंग बिजनेस में रखता हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे किस तरह चॉइस वगैरह करने, कुछ आप कुछ बताइए सर उसके बारे में। नहीं, आप जाइए ना एक्सपर्ट के पास, वो कोई भी, जी, जी सर। वो बता देगा आपको। जी सर, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। या डेटा मैटर्स। या सर, नमस्कार सर। सर मैं 2-3 स्टॉक के बारे में पूछना चाहता हूँ। एक तो एस्ट्रल के बारे में शॉर्ट टर्म व्यू, और रामकृष्णा फोर्जिंग के बारे में लॉन्ग टर्म व्यू, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपने एस्ट्रल इम्पोर्टेंट है। सीएनबीसी देख के किया है क्या शॉर्ट सिलेक्शन? नहीं नहीं सर, टीवी तो मैं देखता ही नहीं सर। ये एक्चुअली एस्ट्रल मैंने क्या किया था, मैंने सेल किया था, शॉर्ट सेल। जैन फेब में थोड़ा प्रॉफिट हुआ, मार्च अप्रैल में मैंने लॉस बुक किया, मई में मैं एग्जिट कर गया। अभी वो 1 महीने में लगभग 25% बढ़ गया। मैं तो शॉर्ट सेल कर रहा था कि वो गिरेगा डेफिनेटली, मतलब बड़ा बैट खेल रहा था। बड़ा तो नहीं बोलूंगा आप लोगों के आगे, 3-4 फ्यूचर मैं शॉर्ट करके बैठा था। लेकिन ये 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ आ गया, और प्रॉफिट ठीक है, अच्छा है। लेकिन अगर कंपटीटर की बात करें, फिनोलेक्स भी रिलेटिवली सेम परफॉर्म करता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। और पीडीलाइट के आसपास भी नहीं है एस्ट्रल, अगर एडेसिव की बात करें तो। इसका सर ग्रोथ जी, क्यों आ रहा है? एस्ट्रल में वो अपने शक्तिमान देखते थे ना, तो उसमें गंगाधर ही शक्तिमान है, बराबर है ना? अच्छा, तो यहाँ पर खेलने वाला ही प्रमोटर है, ठीक है। बराबर है। आपको हाथ में नहीं आने देगा, न तो शॉर्ट में न तो लॉन्ग में। नहीं तो अभी कंसोलिडेट हो सकता है या फिर डाउन जाएगा वापस? वो अरे प्रमोटर बाबा, को पता है। एक मिनट, तेरे पास कितना पैसा है? मतलब सर टोटल तो मार्केट में 30-40 लाख से खेलता हूँ, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स भी, और इसमें एस्ट्रल में 5-6 लाख से खेला था मतलब। और कुछ कितने साल का इक्विटी एक्सपीरियंस होल्डिंग है, इक्विटी होल्डिंग है कुछ। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको?
एक्सपीरियंस तो सर मैं 6-7 साल से करता था। शुरू में म्यूचुअल फंड से डालना स्टार्ट किया था। बाद में अभी ऑप्शन 2 साल से ट्राई किया, मतलब ऑप्शन में प्रॉफिट ही रहा है। ऑप्शन मैंने 10-15 लाख से किया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी। आपको तो अच्छा है, तो चालू रखो और क्या। नहीं तो एस्ट्रल का व्यू आपको क्या लगता था? आप बोलते हैं प्रमोटर, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। और इन दो का, रामकृष्णा फोर्जिंग का लॉन्ग टर्म कैसा रहेगा? बी ग्रुप का नहीं मालूम भाई। अच्छा ठीक है। और इसका इक्वेटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का? वो भी बी ग्रुप है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। या मनदीप जी। हेलो यस सर। सर, मैं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया। ये ये इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कितना एक्सपीरियंस है आपके पास? एक्सपीरियंस तो 4 साल का है, पर मैंने इंट्राडे थोड़ा टाइम किया था, उसमें बहुत लॉस हुआ, बट लॉन्ग टर्म किया तो बड़ा प्रॉफिट हुआ। तो लॉन्ग टर्म ही रखो ना फिर। मनदीप जी, आप जहर को टेस्ट करके बोल रहे हो कि ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, बट तो भी ले लूं या ना नहीं लूं, ऐसा पूछ नहीं, रहे हो आप? थोड़ा पता है, वो थोड़ा लालच होता है कि इंट्राडे कर लें। थोड़ा ब्रोकर बोलते हैं आप ट्रेड क्यों नहीं कर रहे जहाँ पे ब्रोकर चेंज अकाउंट कर दो, है? ब्रोकर चेंज कर दो आप। नहीं, ब्रोकर तो एक ही है, एसएमसी है। हाँ, उसको उनको चेंज कर दो आप, उसको चेंज करके दूसरा ब्रोकर ले लो। तो परेशान करते हैं वो, आपकी इतना आप शेयर रखे हुए हैं इतने सारे, आप ये ले लो वो ले लो, परेशान पर करते हैं। उसको उसको मनदीप है, उसको बोलो कि आपके बेटे को थोड़ा मेरे को बड़ा करना है, मेरे को तो मेरे बेटे को बड़ा करना है। ओके, आप समझे? समर्थ भाई, आपकी बात में ऐड हाँ करूं एक चीज। हाँ हाँ। आपको ब्रोकर अगर बोल रहा है आप करो, आपको पता है कि आपने अपना ट्रेड जर्नल निकाल लिया कि भैया मेरा पैसा बन रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पैसा बन रहा है, और सट्टा करके पैसा ना बन रहा है, तो मार्केट को सट्टा मत पकड़ो ना, सट्टा छोड़ दो, जहाँ पैसा बन रहा है वो काम करो। लास्ट में मार्केट क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या मार्केट में पैसा कमाना है ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मैं पैसा कमाना है हमारे पास। अगर पैसा जिस चीज से बन रहा है, पैसा बन रहा है, वो चीज करके जाओ, कि सट्टे वट्टे बंद कर दो। जो शरद सर बोलते ना, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं सट्टा करने का, सट्टा करना बंद कर दो। इन्वेस्टिंग का अच्छा पैसा बनता है तो इन्वेस्टिंग में पैसा डाल के जाओ। ये दोनों को है ना मिक्स मत करो। दोनों को मिक्स करने जाते हो ना तो आप पकड़ लो कि आप तरबूज डाला कि मुझे मीठा खाना है आज कुछ, उस हिसाब ने डाल दिया करेला, सामने करेला, तो उसका सर, कोई टेस्ट नहीं लेने वाला, सामने नहीं आएगा आपको उस जूस का। सर, अभी 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 मैंने नवंबर में वो पीएफसी लिया था अराउंड 100 पे। छोड़ो ना भाई, वो अभी रात को 1 बजे तेरा सुनेगा, तू लिया था नवंबर में, वो सब छोड़ना यार। नहीं, वो तो छोड़ो, पर वही वो तो रात को दारू पी के तो सब यहाँ पे देखो मजे करने के आते हैं। रात को ये क्या चूतिए के जैसा बोलते हैं, हम लोग दारू पिए ले क्या? नहीं, वो भी क्या है सर, ऐसा बोल रहे थे। अच्छा, एसकेएस। हेलो सर। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था, मेरे पास कुछ टाइम से ये केपीआईटी और आईटीडी सीमेंटेशन था। केपीआईटी लगभग मतलब 70-80% प्रॉफिट में, मैं 900 से सोच रहा हूँ कि उसे बेच देता हूँ। जैसे मार्केट खुलता है 3-4% ऊपर हो जाता है, तो वो 1100 पे आ गया, बेच दूँ या अभी फट जाएगा किसी दिन वो नीचे को? नहीं तो एक देख यार, वो सब कोई कुछ नहीं बोल सकता है कि कल क्या होगा, अभी क्या होगा, कोई नहीं। तो अभी 1100 का भाव है जी। ना, तो दिमाग में रख ले कि 1000 के नीचे बेच देना। ठीक है सर। एसकेएस। अब फिर समझो 1300 हो गया, हाँ तो स्टॉप लॉस ऊपर लेके जा। ठीक है सर। या हाँ एसकेएस। सर।
ये अभी सुपरबली ओवर बुलिश है। इसको जो 1000 रुपए का सर ने बोला ना, हर ऊपर के साइड में इंट्राडे में भी मूवमेंट रख देना ऊपर की साइड। ठीक है, बराबर है। ठीक है सर। इट कैन करेक्ट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। आपको पूछने का टाइम भी नहीं देगा, निकलने का टाइम भी नहीं देगा। तो आप ध्यान रख के करना। बुलिश है अभी, बट इट कैन टर्न द टाइड इजीली। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हार्दिक भाई बोलो केमिकल के राजा। काय का केमिकल का राजा? मार्केट ठंडा हो गया है, स्टॉक गर्म हो गया है। बराबर। सर आज मार्क मूवीज का स्टेटमेंट आया है, इंडिया में नया बुल रन चालू हो रहा है। आपको क्या लगता है सर? तो बराबर है। गया महीने तो सर सब लोग ऐसा बोल रहे थे, मई महीने में सब कुछ बेच डालो। मार्क मोबियस को पहले हजाम के पास जाना चाहिए, बाल सर सही करने के लिए। आपका क्या? या विक्रम या गुड इवनिंग सर। सर मेरे को थोड़ा गाइडेंस चाहिए। मैं जब भी कुछ करता हूँ शुरू में मुझे अच्छा लगता है सर, मैं प्रॉफिट भी आता है, सब कुछ आता है। जैसे ही वो बड़ा करना शुरू करता हूँ ना, एकदम से पता नहीं मेंटल ब्लॉक हो जाता है सर। वो चार्ट्स उल्टे दिखने लगता है मुझे, और बाद में एनालाइज करता हूँ तो पता चलता है। और ये चीज सर मुझे ना कई सालों से परेशान कर रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए सर? अपना किस तरह ठीक करूं? और ट्रेडिंग छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ। ठीक है सर, क्योंकि मेरे को करते हुए सर 10-12 साल हो गया। मैं कई बार छोड़ता हूँ, फिर इन्वेस्टमेंट में आता हूँ, फिर मन करता है कि उसमें जाऊं। हाँ सर। विक्रम जी पिरामिडल बंद कर दीजिए आप ट्रेडिंग में। जो जितना लोड से करते हो ना उतना ही करो, आप ज्यादा मत करो। अच्छा, पिरामिडिंग बंद कर दो आप। नहीं आप भाई बड़ा खेलते हो या छोटा खेलते हो? सर मैं जब तक थोड़ा खेलता हूँ 4-4, 5-5 लॉट में, तब तक ठीक रहता है। जिस दिन वो साला मैं बढ़ा के 15 लॉट के आसपास करता हूँ या 10 लॉट से ऊपर जाता हूँ, पता नहीं मेंटल ब्लॉक हो जाता है, समझ में ही नहीं आता सर। वो चार्ट में समझ में आना बंद हो जाता है, लगता है सब कुछ अपने जैसे ही दिखता है। जिस तरह ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस भी अपना टाइम पे नहीं ले पाता, वो इतना तगड़ा ब्लॉक हो जाता है। तो मैं वही सोच रहा था क्या करूं उसके लिए सर। बिलो 10 के लोड से ही खेलो ना, जहां पर आप कंफर्टेबल हो। ज्यादा लेने से लोड ज्यादा हो जाएगा, पेल्पिटेशन आपको होगा। तो वो रहने दो ना, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है वही करो। कंटिन्यू व्हाट यू आर कंफर्टेबल विथ। आप गाड़ी घुमाते हो, फिर बाद में आपको लगता है मेरे को ट्रक ड्राइव करना है, तो थोड़ा ट्रक आप ड्राइव करने लगोगे। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ सर, मैं बराबर है ना। वही उसका सोचा। गियर, उसका ब्रेक, वो सब अलग होता है। तो 15-20 लोड से आप अगर काम करना चाहते हो तो उसमें लोड भी ज्यादा आएगा ना। हाँ, तो फिर नहीं वही सोच रहा था सर कि अगर आप कुछ वैसा बता देते कि नहीं, जैसे कि ग्रीड कम कर दो विक्रम जी। अच्छा, ग्रीड कम कर दो। आई एम ओके ग्रेट। बीइंग नहीं अपफ्रंट। ग्रीड कम कर दो। ठीक है सर। अदरवाइज ऐसा क्या सर, अपना इन्वेस्टिंग करना शुरू करूं क्या? वो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है फिर। पर इन्वेस्टिंग में आता नहीं है ना पैसा ज्यादा, प्रॉब्लम वो भी हो जाती है। लालच है सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मुझे अपना लालच ही लगता है। अब आपने ग्रीड की बात की तो आई कैन एनालाइज। ओके मेंटर रखो, मेंटर। सर मेंटर के चक्कर में सर मैं बहुत ज्यादा धोखा खा चुका हूँ। मैंने इतनी जगह इतने लोगों के क्लासेस ज्वाइन किए, सब बेवकूफ बनाते हैं सर। मैं काफी मतलब देख चुका हूँ सर, बहुत लोगों से किया। अब या तो मेरे को समझने में अलग हो जाता है, जो वो समझाना चाहते हैं मुझे वो नहीं समझ में आता। और अगर कोई ऐसा तरीका है क्या सर कि मैं आप लोगों के किसी के साथ अगर एनी टाइम इफ यू आर फ्री, तो मैं अपने जर्नल वगैरह शेयर कर दूं, ताकि आप लोग मुझे बता सको थोड़ा बहुत कि मैं कैसे करूं जो पास्ट ट्रेड्स वगैरह, इफ यू हैव टाइम।
or नहीं if you नहीं can suggest someone who can just do the analysis. ये अपने अमित भाई या समद भाई या मैं ऐसा सब नहीं करते हैं. हाँ वो तो ठीक सर. ओके सर. थैंक यू. ओके थैंक यू सर. थैंक्स फॉर स्पीकर दैट. मनन स्पीकर अग्रवाल जी. हेलो हाँ. शरद सर मेरी रिक्वेस्ट है कि शरद सर से सर आप थोड़ा अपना कोई मार्केट से रिलेटेड एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कीजिए ना सर, कोई ट्रेडिंग रिलेटेड. तो क्या मिलेगा तेरे को? सर वो कोर प्रोजेक्ट्स का बोलो ना, कोर प्रोजेक्ट्स का. अरे छोड़ो नहीं, अभी 12:40 हुआ यार. सर आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि सर आप किस टाइप के मतलब क्या सर आप किस टाइप के ट्रेड्स करते हैं कि पोजिशनल इन्वेस्टिंग क्या सर मतलब. मैं एक ऐसा आदमी हूँ, सब कुछ करता हूँ. स्कैल्पिंग करता हूँ, इंट्राडे मारता हूँ, आर्बिट्राज करता हूँ, कॉल पुट स्टॉक्स का करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ब्याज पे. मेरा सबसे बड़ा धंधा है, ब्याज पे पैसा देता हूँ. Okay. और मतलब जो भी जिधर भी पैसा होता है प्रॉपर्टी में घुस जाता हूँ, किधर भी घुस जाता हूँ. एक ही बात है, पैसा बनना चाहिए. ये आप एफएनओ करते हो क्या? हाँ सर, पर मैंने सर बहुत लिमिटेड रख रखा है, मतलब एफएनओ के लिए कैपिटल अलॉट बहुत कम किया हुआ है. मैंने क्या पूछा आपको? हाँ करता हूँ सर एफएनओ. बस, ज्यादा डिटेल क्यों देते हैं? एफएनओ करते हैं ना, एक नियम रखना, किसी दिन भी मार्क टू मार्केट माइनस नहीं आना चाहिए. अगर तू ओके. लॉन्ग है और भाव गिर गया और पुट बेच दे, कॉल बेच दे, कुछ भी बेच दे, लेकिन तेरा मार्क टू मार्केट पॉजिटिव आएगा. ये तू एक महीना अगर कॉन्स्टेंटली अगर कर पाया ना, मतलब सर अगर इंट्राडे में भी अगर मेरा एमटीएम सॉरी मतलब क्लोजिंग बेसिस पे कह रहे हो आप, अगर मेरा एमटीएम आ रहा है तो मेरे को मतलब पोजीशन काटना चाहिए नहीं उसको नहीं, मतलब. पोजीशन काटो नहीं, सामने कॉल पुट कुछ भी बेच लो और पैसा क्रेडिट आना चाहिए. वो ओके, मैं बोल रहा मतलब दिन एंड हुआ तो मतलब अपन को पैसा दे के नहीं जाना है, बस ये करना है हूँ. मेन हाँ. ऑब्जेक्टिव, हम्म. चाहे मैं फ्यूचर्स करूं चाहे ऑप्शंस करूं. बॉस यार, आई विल नॉट स्पेसिफाई एवरीथिंग. ओके. फ्यूचर्स में जो भी तेरे को समझता है कर, ऑप्शन बेच, ये ले, कुछ भी कर, क्रेडिट लेके आ. ओके. और वो थोड़ा फ्रूट हमको बेच देना रोज, ठीक है? क्या मयूर? नहीं, मनन ने तो बात कर ली है, अभी कोई बाकी नहीं है सर. ये मयूर भाई हाँ मयूर भाई है. Hi, sir. My question is on Elecon Engineering. Should I invest in that or not? यास्मीन पटेल. Am I audible? हाँ हाँ. Okay, sorry. कौन है प्रमोटर एलिकॉन का? Sir, no idea. I was studying into Anand in Gujarat, and I know about. प्रयासविन पटेल को नहीं जानते क्या? प्रयासविन पटेल को नहीं जानते? नहीं जानता हूँ सर. मैं सिर्फ आनंद में जब स्टडी कर रहा था तो वो कंपनी का मुझे पता है बहुत बड़ी है, वो ज्यादा नहीं जाने. और मैं ट्रैक कर रहा था, मैंने 25 में भी एंट्री की थी उसमें, बट मुझे 1000 का प्रॉफिट हुआ था तो मैं निकल गया था 45 में. एंड आज जब देखता हूँ तो वो 550 प्लस है. ठीक है बट अभी रहने दो. ओके ओके.
Okay, friends, we'll call it a day. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Good night. Good night. शरद सर लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, सॉरी टू इंटरप्ट सर। आपको नहीं लग रहा कि मार्केट जो एनआईसी बीएससी कर रहे हैं सबको सट्टा खिलाने आ गए? नहीं, मैं पहले ही बोला कि इनका एक ही मकसद है, सबको जुगारी बनाने का, बस। इन्वेस्टर ना बनाने का ना किसी को भी, या हाँ, पूरा मतलब शेयर वो लोग लेंगे। मतलब आपने फिर निफ्टी चालू कर दिया, आप बैंक निफ्टी था, हम शांति से मार्केट का ट्रेड कर लेते थे, वो प्रॉपर था। फिर निफ्टी आ गया, मिड कैप आ गया, अब ये बैंक एक्स आ गया, अभी ये सेंसेक्स आ भी गया। आ गया। हाँ, तो सर आपको नहीं लग रहा है सिंपल सट्टा खिलाने आ गया बाजार को? हाँ, और ये बाजार फूटेगा उसके लिए, मतलब सब ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर सबकी बजेगी एक साइड। सर आपका व्यू चाहिए, समझ रहे आपका व्यू चाहिए। नहीं, मैं कुछ और बोलता हूँ। अपने डुप्लीकेट दारू देखा, डुप्लीकेट सिगरेट देखा, डुप्लीकेट दवाइयाँ देखी, ऐसा बहुत कुछ डुप्लीकेट देखा। मैं फर्स्ट टाइम ये डुप्लीकेट मार्केट देख रहा हूँ। ऐसा डुप्लीकेट मार्केट है, बोगस, यूजलेस। लोग बर्बाद हो जाएंगे, लिख के रखो। जो खेलेगा वो बर्बाद हो जाएगा। Sir, just to add to you, today in my city, a 25-year-old guy working in a private sector bank committed suicide due to this put and call. वहां पर इतना लॉस हो गया तो उसने सुसाइड कर लिया सर। 25-year-old, he was a sales manager. समर भाई, तो आपके हिसाब से प्रोडक्ट मतलब आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये प्रोडक्ट होने भी चाहिए। मेरे हिसाब से तो मंथली का प्रोडक्ट रखो, मैक्सिमम वीकली रख लो, वो भी 2-4 प्रोडक्ट जो बहुत लिक्विड है। आईटी लॉन्च हुआ था, विक्स का लॉन्च हुआ था, तो मतलब ये तो लोगों को सिर्फ सट्टा खिलाने जा रहे हैं। मतलब रोज आओ लॉटरी खेलो, आज रांची लॉटरी खरीद लो, आज सिक्किम की लॉटरी खरीद लो, आज ये खरीद लो। मतलब व्हाट द फक दे आर ट्राइंग टू डू दिस यार। मतलब पब्लिक को बर्बाद करने के लिए प्रोडक्ट बनाए गए। तुम्हें रेवेन्यू चाहिए? पब्लिक नहीं अमित जी, अब तो स्टूडेंट्स भी आ गए इसके अंदर। अरे समर्थ भाई, मैं क्या क्या ना बोलूं। अरे वो आपने सुना नहीं, 19 साल का लड़का आईडीएफसी बैंक का पुट लिया? नहीं, क्या है यार, शर्मजनक बात है। चलिए, विल call it a day. Yes, sir. Thank you. Good night, everybody. Good night, sir. Good night, sir.